So good morning, class, and welcome to the session. And let's get started now. So did people tried building the model? क्लास में बैलेंस है तो क्या किया? कुछ नहीं किया. बहुत सही. ओके ठीक है, फेयर है ना, नो प्रॉब्लम. ट्राई किया था ना, बस ठीक है, इतना बहुत. क्लास में बैलेंस आया. आज देखेंगे उसे कैसे हटाना है. हमारा बैलेंस नहीं आया. बहुत सही. बैलेंस नहीं आया. यस सर. बोलो बोलो. क्या कह रहे हो? किसी में नहीं आया. सो डिसेंट्री में सही मैट्रिक्स आ रहा है, कंपेयर मैट्रिक्स. व्हाट अबाउट अदर्स? डिसेंट्री में नहीं आया. डिसेंट्री में दोनों अच्छा आ रहा है. ठीक है, वेरी गुड. अगर अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है, वेरी हैप्पी. बट मुझे थोड़ा डाउट है. ठीक है, दोनों कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल के रखिएगा. लेट्स सी आफ्टर दिस सेशन. Okay, so decision tree, let's get started, guys. So in decision tree, remember, decision tree is a tree-based model where everyone please go on mute. Where we have to decide. Screen दिख रहा है, guys? Those who have joined online, guys, am I audible? Please quickly confirm. Class, am I audible? Those who have joined online. Check करो देखो audible है यहाँ पे. Someone please unmute. Audible? Audible. ठीक है, fair enough. So even if people are, so इतने कम लोग क्यों ज्वाइन करें? अब तो लोगों के काफी टाइम मिल गया था क्लास दिखाने के लिए. But okay, anyway, so yesterday we have discussed the concept of entropy and information gain, correct? So entropy and information gain was the criteria to build that tree, correct? And remember, yesterday I have told that there are two criteria. One is your entropy and information gain. Another is your Gini, right? Another is your Gini, or you can say Gini score, whatever. So इसके pronunciation हमेशा controversy है, Gini है या Gini है, ठीक है? But up to you. Okay, let's discuss the concept. So what is Gini score? And again, this Gini score or Gini index, Gini score, or you can say Gini index, it was not designed for decision tree. ये concept सदियों से है. And this concept is basically a concept from economy. ये economy का concept है. In economy, basically the Gini score tells you how is the wealth distributed. How is the wealth distributed for each country? Okay, ये वहां से आ रहा है. And it is being used in decision tree to build that tree, right? So for every country, there is a score. If you want, you can go to the Google and you can search for the Gini score of India. Okay, so Gini score will take the value from 0 to 1. 0 to 1.
If the score is towards zero, if the score is towards zero, it means there is a perfect Ram Raj. Everyone is having the equal amount of wealth. And if the score is towards one, it means it is a perfectly capitalist society where one person is having everything and rest are having nothing, right? So when the score moves towards one, it means there would be few rich people and many poor people, right? So what do you think for India? What would be the Gini score? It would be towards one or it would be towards zero? One की तरफ जाएगा because India में you have a problem of have and have nots. There are many poor people or middle class, and then there are few rich people, capitalist or billionaire, trillionaires, millionaires. Right? So that is just a background of what Gini score is. After the class, probably you can search the Gini score of India. And you can search the Gini score for other countries also, right? Which this perfect Ram Raj. सबके पास सब कुछ है, ठीक है? मतलब there is no poor people and the income is or the wealth is equally distributed. If it is towards zero, if it is towards one, then there is a problem of few rich people and many poor people. Some people have huge amount of wealth, some do not have anything. And probably I think for India, the Gini score can be very high. If you want, you can check the latest score also from some website. Okay, so that is just a background of what Gini score is. Now let's talk about what is how Gini score is used in your decision tree. Remember, yesterday we have discussed that when you are making a decision, decision is not based only on one parameter. It is not based only on one parameter. So for example, let me say, if you want to mark someone, if I am taking an example of COVID also, and let me define two categories, high risk and low risk. Which type of people fall in high risk and which type of people fall in, let's say, low risk. So normally we can say that if the age is high, if age is more, then person may be in high risk. But not everyone who is of more than 70 years would be of high risk. And not everyone who is less than 40 would be in low risk. Right? So it means decision cannot be based only on one parameters. You have multiple parameters. So risk can be based upon your age also, can be based upon whether you have any comorbidity. It can be based upon your lifestyle habits also. It can be based upon your age also, gender also. Which type of city do you live? Risk can also depend upon how much money you have. If you have more money, chances of dying are less. If you have less money, chances of dying are more. So, so many factors can be there, right? But we are saying that the most important or the most significant parameter should be checked first, right? Makes sense? Whether you're doing decision tree or anything, जो सबसे significant parameter होगा, सबसे पहले check करना चाहिए. Again, remember the example. Let's say you want to give an offer letter to a person. Then there are several criteria. So let's say you are checking whether your score, whether the person should be engineering graduate. So engineering graduate should be checked first. Your marks, let's say 70%. So after you satisfy these criteria, then probably you should go for your interview. It should not happen that ki pehle interview le liya, baad mein marks check kar rahe, doesn't make sense. Right? So it means we should have a criteria. One of the criteria which we discussed yesterday was entropy and your information gain. Another criteria which I want to discuss is your Gini score. Okay. Background clear hai? Why do we want something? Why do we want a Gini score, right? And again, I'm repeating, either you can use Gini or you can use entropy. You cannot mix both of them. ऐसा नहीं हो सकता कि that half a tree is built on Gini, half a tree is built on entropy. That is not possible. Either entirely Gini or entirely entropy. Right? अभी तो मैंने एक्सप्लेन करा ही नहीं, अब तो करने वाला हूँ. अभी फॉर्मूला कहाँ डाला, अभी तो बैकग्राउंड बिल्ड कर रहा हूँ. फॉर्मूला आएगा, वेट करो, ठीक है. I haven't explained Gini till now. I am just building the background. Why do we need Gini? And then we'll enter what is Gini. Probably now we are entering how. Let's now discuss how Gini can be used to build our tree. हमारा पेड़ गिनी से कैसे बिल्ड होगा, फल कैसे आएंगे,
Okay, I'll share a slider. Okay, read karo please. Gini index is also known as a Gini impurity index, which basically measures the incoming impurity. Gini index is range bound between 0 to 1. तुम अपने आप you mute हो दो. Okay, then मैं अपने आप को mute कर लेता हूँ because your voice is also passing through my laptop. Okay. This is the significance of Gini. ठीक है, इसको I am not putting any importance. याद करना चाहो याद करना. Now Gini index is also used in decision tree. Like entropy, they can be used as criteria to create the node as well. Formula for Gini index is 1 minus summation EI whole square. So what is the formula for Gini index? Now we are entering into the formula 1 minus summation EI whole square, where I is equal to 1 till I is equal to J. This is the formula. Okay, we'll see this formula. If this formula is not yet clear, we'll see. What is P over here? What could be the P over here? Proportion. It is actually probability. ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे लिख भी दिया था, where Pi is probability. ठीक है, so the best case scenario is when Gini index is 0, and the worst case scenario is when Gini score is 1. Where the score is least, that is taken as your first node. Where the score is least, it is taken as your first node. I repeat, where the score is least, that is taken as your first node. Now, let's see this thing. Don't worry about the formula. Formula would be clear when we take this example. Okay. ये table सबको दिखता है? Can people see the table? Yes. So in this data set where loan status is your target variable, I hope people are clear with this example. ऐसा example हमने लिया हुआ है. It is I have taken it from the very same data set so that people can easily understand. In this data set where loan status is the target variable, let's calculate the Gini for all the 3 variables. That is your credit history, education, and property area. Remember, before I put the formula, अपने mind में problem को ध्यान करो. Problem क्या है? अगर problem याद रहेगा ना, तो solution हमेशा समझ में आ जाएगा. So this is your target variable. This is your x1. This is your x2, and let's say this is your x3, right? So when I will build my tree, the tree would be splitted based upon my criteria, some criteria. So whether I should first split should be based upon x1 or x2 or x3. And after, again, this over here, I should check my x1 or x2 or x3. Same thing over here, right? I need some kind of formula so that I can split my tree. हाँ, sorry. हाँ, ये यहाँ पे change कर दो. ये change कर दो. Good point. Good observation. So this is your y and this is your x3. Correct. Okay. So loan status is your target variable. Very good observation. It is your target variable. And your credit history x1, credit history, education, and property area are your x1, x2, and x3. So whether I should split, whether I should check credit history first, or I should check education first, or I should check property area first for approving the loan. That is what my problem is. So now what I will do, I will introduce the concept of Gini. Okay. इतना सबको समझ में आ रहा है? अब देखो कैसे होगा. सपोज करो हमने ऐसे कर लिया.
पेंट विंडो सही से नहीं आ रहा है, इसको डाल। पेंट विंडो दिख रहा है? Pardon? Okay, now let us find the Gini between property area and loan status. ठीक है, ध्यान से देखते जाना. I will tell you how to find the Gini between property area and loan status, and then you have to find the Gini between your education and loan status, credit history and loan status. ठीक है, now let me say something like this. So if property area is equal to urban, let me say I am saying property area equal to urban. So true and false. How many records are falling as urban? So record number 1, 2, or let me say record number A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J. For how many records this condition is true? Can I say the condition is true for A, B, D, E? E के लिए भी तो true है. E and F and I. And this condition is false for how many records? C, G, H, and J. सबको यहाँ तक clear है? Yes, no? Yes. So I am saying property area equal to urban. So there are 6 records A, B, D, E, F, and I, for which the property area is urban, and there are 3, not 3, but there are 4 records for which the condition is false. C, G, H, and J. So 6 and 4. Out of these 6, अब ध्यान से सुनना मेरा statement. Out of these 6, how many loans were approved? How many loans were rejected? Out of only these 6 which fall under the urban, how many were approved? How many were rejected? So I will say approved were these many. So for how many were approved? So A was approved, B was approved, E was approved, F was approved. Yes, so 4Y and 2N. Or let me say NS2. यहाँ तक सबको समझ में आया? Now consider about these 4. Those 4 people for whom the property area was not urban, how many loans were approved? How many loans were rejected? सिर्फ उन्हीं 4 को चेक करो. Check your C, G, H, and J. So how many approved? How many rejected? Tell me the numbers. 1 approved, 3 rejected. Before I move any further, guys, tell me, are you clear of this breakup? How did I got 6 and 4? And how was this 6 splitted into 4 and 2? And how was this 4 splitted into 1 and 3? यहाँ तक clear है? अगर यहाँ तक clear नहीं तो आगे का फॉर्मूला वैसे समझोगे. तो make sure that it is clear. I'm just waiting so that idea gets synced in your brain. Okay, now what is the formula for this thing? Formula is something like this. So formula is 1 minus summation Pi whole square. Pi whole square. So what I will do is, I'll draw one line in between it. I will find the Gini on left hand side, and I'll find the Gini on right. And then at the end, I'll take the weightage, like we have taken the weightage in our this thing. So this formula would be written as 1 minus summation 4 by 6
whole square plus 2 by 6 whole square. And this would be written as 1 minus summation 1 by 4 whole square plus 3 by 4 whole square. ये नंबर्स यहां से आ रहे हैं और ये नंबर्स यहां से आ रहे हैं, दिखता है? So if your property area is urban, when your property area is urban, are all the loans approved? क्या सारे लोन अप्रूव हो रहे हैं? नहीं. So when your property area is urban, your 4 loans are getting approved and 2 loans are getting rejected. So probability of loan getting approved when property area is urban would be 4 by 6 only. There were 6 records which fall in urban, and out of those 6, 4 were approved. So probability would be 4 by 6. And there were 2 records which were not approved. So probability would be 2 by 6. And if you notice, the formula is 1 minus summation pi whole square. Same thing over here. When property area is not urban, then there were 4 records. Out of those 4 records, 1 loan was approved and 3 loans were not approved. अब इसको solve कर लेते हैं. So 1 minus 4 by 6 would be how much? So let me say 4 by 6 would be 16 by 36 plus 4 by 36. So 16 plus 4 would be 20. So this would be 1 minus 20 by 36. So ये हो जाएगा 36 minus 20. That would be 16 by 36. So 4 4s are and 4 9s are. So final answer आ जाता है 4 by 9. देखो सही किया है? सही है ना? Simple है. If you want, you can find it in decimal. I have found it in fraction. Let's solve it over here. So 1 minus 1 by 4 is 1 by 16 plus 9 by 16. So it would be 1 minus 10 by 16. 10 by 16 is nothing but 1 minus 5 by 8. 5 by 8 हो जाएगा. So it would be 3 by 8. Final answer 3 by 8 आएगा. 4 by 9 and 3 by 8. Is everyone clear? How did we got 4 by 9 and how did we got 3 by 8? 4 by 9 and 3 by 8. Now, so what is this 4 by 9? 4 by 9 is the Gini score or Gini value on for how many people? ये कितने लोगों की Gini है? For 6 people. Yes, perfectly right answered. And this 3 by 8 is a Gini score only on the 4 people. And remember yesterday the concept of weightage. So I cannot say that this 4 by 9 is representing the Gini score of the entire population. It is representing only of those 6 people. Out of 10 people, it is representing only for this thing. So what would be the weightage of 4 by 9? Weightage of 4 by 9 would be 6 by 10. And weightage of 3 by 8 would be 4 by 10. Right? So what I can do is I can say what would be the final Gini? Final Gini would be 4 by 9 into 6 by 10 plus 3 by 8 into 4 by 10. अब इसकी जरा वैल्यू निकालो प्लीज सब लोग. पाइथन में डाल के देखो ना जुपिटर नोटबुक में. इट वुड बी इजी. 4 by 9 into 6 by 10 plus 3 by 8 into 4 by 10. वैसे चाहे तो मैं मैनुअली 0.41. 0.41. Okay, boss. 0.41. Others please confirm. जो सिद्धार्थ ने आंसर दिया है 0.41 आ रहा है. 0.41. So what is this 0.41? 0.41 is the Gini between property area and the loan status. ठीक है. The way I have found the Gini between property area and the loan status, क्या दुनिया में हमें कोई रोक सकता है to find between education and the loan status, between credit history and the loan status? And wherever the Gini, so similar, the way I have found the Gini between property area and loan status, which is your 0.41. Similarly, I can find between education and the loan status. It may be something.
And similarly, I can find between my credit history and loan status. And did you notice on the in the slider I have written one point, lower the value, more significant is that variable. याद आ रहा है? So where the score is least, that is taken as your first node. So remember what is problem in my, मेरे पास अभी problem क्या है? मेरे पास problem ये है कि whether at the first node whether I should consider credit history or education or property area. If I find the Gini for all three of them, whichever Gini would be least, that would be taken as the first node. जो second least होगी, that would be taken as third node, and then so on and so forth. So before I can decide which one would be my most significant, what you guys have to do? You have to find the Gini between education and the loan status, credit history and the loan status. I give you 5 minutes. Please find the Gini between education and loan status, credit history and loan status. Example is in front of you. The way I've done the calculation. सब लोग please करो. It is 10:26. I want answer by 10:35. 10 मिनट दे रहा हूँ. स्क्रीन बड़ा करूं क्या?
So start sharing your answers to me as and when you get the answers. Okay. सबके ऐसे अलग अलग आंसर आएंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर अलग अलग आंसर आ रहे हैं इट मींस कुछ ने तो गलत किया ही है। सबके सेम आएंगे तभी भी हो सकता है सबने गलत किया हो, लेकिन हो सकता है सबने सही किया हो। किसका? 0.48। ओके ठीक है। तुम्हारा 1 से सीधे 0 कैसे हो गया? जिसने बोला है जो आ रहा है एक स्टेप और लो और जब सबसे 0 आने का मतलब क्या हो गया? तो और सबसे क्या है? 0 आने का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट लो थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो। सही आंसर है तुम्हारा, लेकिन बेस्ट पॉइंट बताओ क्या हो? 0 आने का मतलब क्या है? बायस का मतलब क्या होगा? तुम लोग को लगता है बायस का मतलब नहीं होगा। क्या तुम बायस को देख रहा? ऐसा तुमको लगता है, लेकिन हर इंसान बायस है। तुम्हें कभी किसी को नहीं कहता है अरे यार ये तो ऐसा होगा, अगर कभी आया है तो मॉडल भी बायस हो गया तो इंसान बायस। इसका नाम ये है तो ये ऐसा होगा। तो यार साउथ की मूवी ऐसी होती है, नॉर्थ की ऐसी होती है, इंडियन होता है। अरे कभी क्या है बायस तो मेरा भाई है तो अच्छा ही होगा। हमारी किसी से लड़ाई हो गई, मान लो आदमी गलत नहीं था, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि आदमी हर फील्ड में गलत होगा, कुछ फील्ड में आदमी, लेकिन तो मतलब ऊपर प्रॉपर लगा था कि आदमी हर फील्ड में। तुम बायस हो। One more minute, guys. So Logic says it is 0.40 between education and non-status. Is it? Education and non-status में कितना है? 0.48. Okay. And credit history and loan status? Credit history and loan status 0. Okay, fair enough. Seems to be 0 only.
Okay, now let's take it up. So first of all, let's find between our, मैं यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और let me take it from the, let me put it over here. Okay. Now, if I talk, are you able to see the paint window, guys? दिखता है? So let's talk about credit history. I'm taking one more, credit history and loan status. So let me say, if credit history is equal to 1. So there, how many records are there which belong to credit history as 1? So record number A, record number B, C, D, E, F, G, H, I, J. So records are A, B, E, F, and G. So there are 5 records. If 5 records belong to 1, then there would be 5 records which do not belong to 1. And those would be your C, D, H, I, and J. Out of these 5 records which belong to credit history 1, how many loans were approved? All the loans were approved. सारे के सारे approve हो गए. So 5Y and 0N. And similarly 0Y and 5N. Correct? Check करो ये सही है. Now let's apply the formula. So formula would be 1 minus summation Pi whole square. It means 5 by 5 whole square minus 0 by, this is N actually, minus 0 by 5 whole square. Okay. So this is nothing but 0 only. Correct? 5 by 5 is 1. 1 minus 1 is 0. So ये पूरा answer 0 हो जाएगा. And similarly, 0 will also come from left hand side. And since both are 0, the final answer would also be 0. And remember, if Gini score is least, that is your best case scenario. So I can say, अब 0 से कम तो कोई चीज हो नहीं सकती. So credit history, I can take credit history as my first node. And if your credit history is equal to 1, then there would be 5 Ys and 5 N. So do you notice, just by using credit history equal to 1, I have done 100% correct prediction. दिख रहा है? 100% correct prediction हो गया, right? So why do even I need to look into any other criteria? अगर किसी का Gini score, किसी variable का Gini score 0 आ जाता है, then you don't need any other variables. You can do the correct prediction only by that variable itself. So basically, what does it mean? If your credit history is 1, all the loans would be approved. If your credit history is 0, all the loans would be rejected. So there is no need to look into any other variable. And so this problem, that which variable should be the first variable, which should be the second, which should be the third, is answered. Okay, so you have got a condition using which you can do your 100% correct prediction. So why do I even need to look into any other variable? ठीक है ना? ट्री उतने पे ही स्टॉप हो जाएगा. बट रियल लाइफ में तो ऐसा होगा नहीं. That one variable can answer all your questions. Okay. कुछ कोडिंग कर लें.
Okay, tell me one thing. Let me change the data set this time. मैंने कभी ये वाला डेटा सेट दिया है CTG? आज दे देता हूँ. मैंने एक ईमेल सेंड की, प्लीज चेक करो. फाइल मिली सबको, सबने रीड करी? Guys, you got the file? File को read किया? Okay. See, check your chat window. I have written the explanation for this thing. Probably if you want, I can put it on the over here also. मैंने chat पे वैसे डाला explanation. So over here, you can see that there are 4 columns.
LB, AC, FM, and NSP. So it's the meaning of this column. So basically, ये एक medical data है. It is a medical data of a pregnant woman. Okay. So the fetus, there are some parameters. LB, that is your beats per second. AC is acceleration per second, and FM is your fetal movement per second. And the pathologist or the doctor is doing the testing. And at the end, you want to find whether the patient is normal, suspect, or the pathological. So what is your target variable? Target variable is your NSP. NSP is your Y variable, target variable. LB, AC, FM are your X variables. And this time, do you notice your NSP contains not 2 values, but 3 values. It is not a binary data. Purposefully, I have changed the data. So CTG dot NSP, and if I say value counts, you will notice that there are 3 values, 1, 2, and 3. So 1 implies that your patient is normal. So for normal, it is 1. For suspect, it is 2. And for pathological, it is 3. What is meaning of pathological? Pathogen क्या होता है? So pathological over here in medical terms will means patient is ill, needs a treatment. Suspect means the practitioner or the doctor cannot say with surety whether it is normal or pathological. 1 is normal, doesn't need any treatment. Suspect is some further investigation is needed. Pathological means patient is ill, needs the treatment. Okay. LB, AC, FM are your X variables. NSP is your target variable. Target variable has 3 categories. Okay. Build कर लें decision tree. Any type of data cleaning, यहाँ पे data cleaning ज़्यादा required नहीं है. So let me say CTG dot is null. Let's check for our null. Though I know इसमें nulls नहीं है, but still let's do a check. Nulls are not there. So can we directly go for our sampling? Sampling to कर ही लें. How many records we have? Number of records are enough. So it is more than 2,000 records are there. So you have collected the medical data of 2,000 people, and now you are trying to predict based upon LB, AC, FM, which type of patient is normal, which is pathological, and which is ill. जो काम डॉक्टर कर सकता है वो काम हमारा मशीन भी कर सकता है. ठीक है, सिर्फ हमें ये पैरामीटर्स दे दो, हम खुद बता देंगे. ठीक है, चलो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू आवर सैम्पलिंग. सो आई विल से फ्रॉम sklearn dot model selection, import train test split, and let me say CTG train, CTG test, train test split, and now you guys have to increase your coding speed. थोड़ा fast करना है. I'll not wait every time. CTG train X, CTG train Y equal to CTG train dot ilog, and then I'll say comma. Shall I give 0 colon, or let me say 0 comma 1 comma 2. छोड़ो हटाओ, इसको कॉपी कर लेंगे, इधर डाल देंगे. And what is my target variable? Target variable is at the end, so let me just give -1. Fair enough. Let's copy this, put it over here. Copy CTG test. जहां जहां ट्रेन है उसको टेस्ट से रिप्लेस कर दो. Sampling done. Then I'll say from sklearn dot tree, let me say CT dt CTG equal to decision tree classifier, and इसको fit कर देते हैं. Fit decision tree fit, correct CTG. इसको कॉपी कर लेते हैं.
यहाँ डाल देते हैं, फिट की जगह कर देते हैं, करेक्ट। And for CTG train X, let me say CTG test X, production done. Let's from sklearn dot matrix import confusion matrix. Then I'll say tab CTG equal to confusion matrix. From side, you want your actual values. So I'll copy this thing, put it over here. From top to bottom, you want predicted. Confusion matrix build. Okay. I'll just wait till everyone creates the confusion matrix. Nothing for me to explain. I wish people do not look at my code, they do their coding on their own. But still, I'm showing my code. RS of the model. How many people got till confusion matrix? Got it? Okay, fair enough. Now, okay, let's wait for one more minute and then let's discuss. Got it? Achha, now.
Are you getting these type of numbers? The numbers may not be exactly same, but are they kind of similar? Okay, they may not be same because our sampling is random, so everyone may be getting little bit different numbers, but they would be kind of same, right? So over here, when you are building your confusion matrix, do you notice it is not 2 by 2, but it is 3 by 3 matrix. Okay. In your target variable was NSP. What were the values in your NSP? 1, 2, 3 थे. Check करो. Value counts किया था ना? Value counts किया था तो उसमें कौन कौन से values आ रहे थे? 1, 2, 3 या 0, 1, 2 आ रहा था? 1, 2, 3. So this is your 1, this is your 2, and this is your 3. So sklearn or confusion matrix is intelligent enough that it will give you in the same order 1, 2, 3, 1, 2, 3. If you look from the top, you see your which values? Predicted values. If you see from left to right, you see your actual values. If you remember 2 by 2, then whether it is 3 by 3 or 4 by 4, no problem. Now, what is this 320? If you look from the top, it belongs to class 1. If you look from left to right, then also class 1. It means for this 320, your prediction has gone right. So I'm attaching a T over here. T stands for your true. What about these 28? If you look from the top, it belongs to class 2. If you see from left to right, then also class 2. So iske liye bhi T laga de. What is true? True means when actual and predicted are same. What about these 11? If you look from the top, belong to class 3. Look from left to right, belong to class 3. So this is true. And I think all of others would be false. What about these 16? If you look from the top, it belongs to class 2. If you look from left to right, it belongs to class 1. So iske liye false laga de. What about these 6? If you look from the top, belongs to class 3. Look from left to right, belongs to class 1. What about these 25? If you look from top, it belongs to class 1. If you look from left to right, 2. Now let's speed it up. So for this 6, again, can I attach a F? ऊपर से देखा तो 3. Left to right देखा तो 2. What about these 11? From top it is 1. From left to right it is 3. What about these 3? From top dekha to 2, left to right dekha to 3. So keep one thing in mind, whether it is 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 10 by 10, the diagonal would always be true, and leaving diagonal, every other thing would be false. Okay? Leaving this thing, every other thing would be false. Now tell me, how many records? Question ध्यान से सुनना. How many records actually belong to class 1? How many records actually belong to class 1? Yes, absolutely right. थोड़ा जोर से बोलना चाहिए था अगर सही आंसर है तो. 320 plus 16 plus 6. Correct? How many records actually belong to class 2? 20. Correct. How many actually belong to class 3? 11 plus 3. बराबर. ठीक है. And similarly, I can find how many predicted under class 1. अगर हमें पता चल जाए how many actually belong to class 1, how many predicted under class 1, and I can get the performance of my class 1. First, before I go over there, what can I say? I can say accuracy would be nothing but it would be equal to 320 plus 28 plus 11. You will add diagonal divided by all the total. I'll not say all the totals. Total तो अपने आप में सब पे ही होता है. I'll just say total. ठीक है ना? You add all these 9 numbers, you get the totals, and you have done the correct prediction for only these 3. तो accuracy के में तो कोई change नहीं आएगा. The way you find accuracy will still remain the same. ठीक है? Now over here, the
The way you find precision and the way you find recall will change. sklearn अब तुम्हारी मदद करना बंद कर देगा. You cannot find precision recall using your sklearn because it will work only for 2 by 2. चाहो तो करके देख लो. देख लिया क्या आंसर आया? एरर दे दिया. इसलिए मैंने बोला अपना कंसेप्ट बिल्ड कर लो. सॉफ्टवेयर रहे ना रहे, दिमाग तो रहेगा. ठीक है ना? sklearn अब यहां से मदद करना छोड़ देगा. जैसे 2 by 2 से 3 by 3 पे जाओगे ना, it can find accuracy but it will not be able to find your precision recall anything. It will give you error. If you don't trust me, find कर लो, error ही आने वाला है. Okay, but now your knowledge is gonna help you. Your understanding your concept will help you. ठीक है? So over here I can find the overall accuracy. किसी को doubt है overall accuracy कैसे आएगा? नहीं. Overall accuracy would be nothing but total number of correct prediction divided by total records. So you add all the diagonal elements divided by the total. सारे 9 का elements का sum ले लो and divide by. ठीक है? Now, what is your performance, or you can say accuracy for class 1? Accuracy for class 1. Accuracy for class 1 would be how many records actually belong to class 1? 320, 6, 3 plus 6. Out of these many records which actually belong to class 1, तुमने कितनों के लिए सही prediction किया? Only for 320. So accuracy for class 1 would be 320 plus 16 plus 6. This is nothing but you can say TPR for 1. देखो वही है. Similarly, you can say accuracy for class 2 और performance only for class 2 would be how much? कोई बताएगा प्लीज? न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 28. यस, दिल खुश हो गया मेरा सुन के. 25 plus 28 plus 6. कंसेप्ट बिल्ड होता हुआ दिखता है. ठीक है? दिस वुड बी परफॉर्मेंस फॉर योर क्लास 2 और यू कैन से TPR for class 2. ठीक है ना? So performance for class 2 and similarly I can say point for performance for class 3. It would be 11 upon 11 plus 3 plus 11, right? ये हो गया. This is performance for your class 3. And similarly, you can find the precision for class 1, precision for class 2, precision for class 3. Now let's find. Precision for class 1. अगर 2 by 2 होता तो precision क्या होता है? True positive upon true positive plus false positive. वही same formula यहाँ डाल दो. So precision for class, what is precision? Precision is how many you predicted divided by how many you actually had. So क्या हो जाएगा? Precision for class, let me precision for class 1. Precision for class 1 would be 11 upon 11 plus 25 plus 320. अच्छा, before I move further, let me do one thing. What are these 16? ये जो 16 है जो false है, are they false 1 or false 2s? False 1. I am talking about these 16. दिखता है? ये false 1s है या false 2s हैं? अभी तो 1 बोला था, अभी 2, दोनों बोल दो, 3 भी बोल दो. ये false 2s हैं because final answer is based upon your prediction. मैं बचपन से बोलता हूँ. So for these 16 record, they were predicted under class 2. तो ये हो जाएंगे false 2. और ये भी false 2 हो जाएंगे. और ये क्या हो जाएंगे? false 3. ये भी false 3. और ये क्या हो जाएगा? false 1, false 1. ठीक है? अगर थोड़ी देर के लिए 1 को तुम एक पर्टिकुलर क्लास मान लो. So how did you find the precision? Precision was true positive upon true positive plus true false positive. Or suppose what is V? P is nothing but a class.
लेट्स से हमने क्लास को p की जगह क्लास को 1 से डिनोट करते तो t1 अपॉन t1 प्लस f1 होता, बराबर यही होता ना। तो आप वही सेम फॉर्मूला यहाँ डाल दो। So when you're finding the precision, what it would be for class 1, it would be T1 upon T1 plus your plus F1, ठीक है ना। सो प्रिसीजन मेरा कितना हो जाएगा, प्रिसीजन मेरा हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 25 प्लस 11। इफ यू आर प्रिडिक्टिंग, सो बेसिकली एक सेकंड वापस देखो सब लोग। सो व्हेन आई से 320 plus 25 plus 11, what are these numbers? These are the people which were predicted under class 1। अगर ऊपर से देखा तो प्रिडिक्शन है, out of 320 plus 25 plus 11 which were predicted under class 1, only 320 belong to class 1। तो तुम्हारा प्रिसीजन कितना हो जाएगा 320 plus 25, तो प्रिसीजन कितना हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 320 plus 25 plus 11। अब समझ में आ रहा है। टीपीआर के लिए हमने क्या करा, हमने ये वाली ऐसे लिया, लेफ्ट टू राइट ले लिया, और प्रिसीजन के लिए ऊपर से नीचे ले लिया, ठीक है ना। And so what would be that precision for class 2? Precision for class 2 में न्यूमरेटर में क्या आएगा, बराबर। This would be precision for class 2 and precision for class 3 कितना हो जाएगा 11 ठीक है। एंड अगर टीपीआर एंड प्रिसीजन आ गया तो अपन अपने आप ही निकाल लोगे, 2 into p into r divided by p plus r, that's it। अब दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब अगर कस्टमर पूछता है व्हाट इज प्रिसीजन फॉर क्लास 1, तो तुमको ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। वैसे एक तरीका है जिसमें सॉफ्टवेयर अभी भी मदद कर देगा, लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं, बताऊंगा तो फिर तुम लोग दिमाग लगाओगे नहीं। Okay, now यस, अच्छा लोग कर रहे हैं, ओके ठीक है। Okay, now acha, let's come back to this coding panel.
in this confusion matrix, so what is my overall accuracy? So for finding the overall accuracy, I don't need to worry much. I can just say dot diagonal dot sum, and I can divide it by sum. Multiply it by 100 and you get the answer in percentage. So overall accuracy seems to be quite good. 84%, right? Which is a quite good accuracy. 84.27. Now, कोई प्रॉब्लम दिखती है मॉडल में? एनी इश्यूज इन द मॉडल? सपोज करो तुम एक डॉक्टर होते और जिस कंपनी ने मशीन बनाई है वो तुम्हारे पास लेके आता, तो तुम उससे खुश हो जाते हैं या कुछ परेशान होते? अरे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम लोग क्या कोड कर रहे हो? कोडिंग तो खत्म हो गई ना, काम करता हूँ, कोडिंग हटाएगा। लो आप करो, बताओ, मेरे उस क्वेश्चन का आंसर करो। इसको भी हटा देता है। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। सो लेट मी से यू वांट टू यूज दिस फॉर्मूला और यू वांट टू यूज दिस मॉडल ऑन योर पेशेंट्स। कोई प्रॉब्लम वाली बात दिखती है या नहीं? सब कुछ सही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? सोचो तुम डॉक्टर हो और तुम इसे यूज कर रहे हो अपने प्रोफेशन में, तो क्या प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? या क्लास वन में ज्यादा वैल्यू तो होने, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता? हाँ। ओके, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी? अरे सिर्फ एक बंदे का दिमाग चला, गुड। आई विश तुमने ये आंसर इंग्लिश में दिया होता, तो आई वुड हैव बीन मच हैप्पियर। नाउ सी गाइस, द प्रॉब्लम विद दिस मॉडल इज वेरी ह्यूज। ये मॉडल यूज करने वाले हो तो तुम्हारे बहुत से पेशेंट मरने वाले हैं। मरने वाले क्यों हैं अभी पता चलेगा। सो विच इज द लास्ट कॉलम? लास्ट कॉलम इज फॉर योर क्लास 3, और आई कैन से द लास्ट रो इज आल्सो फॉर योर क्लास 3। एंड व्हाट इज क्लास 3? क्लास 3 याद करो, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया था, is pathological. Pathological means जो ill है, they need the treatment. So out of 11 plus 3 plus 11, so which means 22 plus 3 25, जो 20 not हाँ कितना हो जाएगा 25 ना. So out of 25 patients who are pathological, you are giving treatment only to 11. For 3 of them you are saying suspect, it is still okay, you will do some further testing, but बाकी 11 लोगों को तुमने घर भेज दिया. They needed a treatment, but you are not giving them any treatment. And if a person is ill, even if you send home, तो वो सही तो हो नहीं जाएगा, उसकी तबीयत तो थोड़ी ना एक दिन बाद या 2 दिन बाद खराब होने ही वाली है. And in your medical thing, the time is very crucial. जो ट्रीटमेंट आज मिल सकता था, बचा सकता था, 2 दिन बाद शायद नहीं बचा पाए. So for class 3, do you notice, for pathological patient, your performance is less than 50%. Out of 25 people who are pathological, you are giving treatment to only 11 of them. Now consider there were 5,000 patients which were pathological. तो तुम तो सिर्फ 2,000 लोगों को ट्रीटमेंट दोगे, 3,000 को घर भेज दोगे, which would be a very big number. Imagine on a larger scale, एक बड़ा hospital where hundreds of patients are coming, right? So this number on a larger scale will transform into a large chaos. लोग तुम्हारी दुकान के सामने धरना प्रदर्शन चालू करेंगे, ठीक है, अगर इतने बड़े नंबर्स में फॉल्ट आएंगे.
ठीक है. And why this problem is happening? Why? Because class imbalance. I want my model to be very good when it catches the class 3. Even if patient is normal and it is predicted under 2 and 3, it is still okay. At least you are not playing with his life, right? But if a patient is pathological and you don't give a treatment, it is a very serious thing. Suppose करो किसी को डेंगू है, time is very important over there, या मलेरिया है, and your testing kit says मलेरिया नहीं है, तो उससे मलेरिया सही तो हो नहीं जाएगा. After 2 days, things will get worsen up, right? And if you don't give proper timely treatment, वो ऊपर चला जाएगा. ठीक है ना? So basically, can you now, is everyone clear what is the major issue in this model? If you find the accuracy, in terms of accuracy, model is awesome. 84-85% accuracy. But in terms of class 3, the model seems to be failing. And model fail कर क्यों रहा है? Model is failing in terms of class 3 because do you notice the total number of records for class 3 are very less. If you compare the ratio, so if you compare the total number of records कितने हैं? 2126 and the records for class 3 are 176. So class 3 का ratio कितना हो जाएगा? 176 divided by 2126. सिर्फ 8% रिकॉर्ड हैं जो क्लास 3 को बिलोंग कर रहे हैं. दिस इज द रेशियो फॉर क्लास 3. रेशियो फॉर क्लास 2 कितना हो जाएगा? रेशियो फॉर क्लास 2 वुड बी 295. सो 13 प्लस 8 अराउंड 21 हो गया. तो बाकी 78% 1 का आ रहा होगा. 1655 1655 divided by 2126. 77 to 78% उसका आ रहा है. And that is why, so can you notice? So if you compare with this 8% with 77 or 78%, so around 10 times का difference आता है, दिख रहा है 9 point something. 13 and 7 around 5 times का difference आता है, दिख रहा है 5 to 6 times. 13, 6 to 78. And that is why if you notice the model is doing very good for your class 1. It is little bad for class 2 and it is worse for your class 3. क्लास इम्बैलेंस का प्रॉब्लम समझ में आया? ओवरऑल तो मॉडल अच्छा है on terms of accuracy, overall accuracy, but it is failing for the class which are underrepresented. So if class imbalance is the problem, then what is the solution? Oversampling and undersampling. So let's go for a oversampling. But oversampling किस पे करते हैं? ट्रेन डेटा पे करते हैं. ओवरसैम्पलिंग इज ऑलवेज डन ऑन दी ट्रेन डेटा. ट्रेन डेटा पे करते हैं. याद आ रहा है? तुम कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? मैं समझ नहीं पाया. हाँ, which is underrepresented or which is minority. Yes, that is also right. So oversampling means I increase the records for the class which is underrepresented, right? Which is the class which is underrepresented? Class 2 and 3 are underrepresented. So if you want, you can increase the records for class 2 and 3, or if you want, you can only increase the records for class 3. ठीक है, एक काम करते हैं. सैम्पलिंग कहाँ पे हुआ है? सैम्पलिंग यहाँ पे हो गया. ठीक है ना? कैन आई से द सैम्पलिंग हैज बीन डन एट लाइन नंबर 379. 379 के बाद तो मैंने एक्स एंड वाई में डिवाइड किया, राइट? बिफोर डिवाइडिंग इनटू एक्स एंड वाई, let me do the sampling. So what I'll do, I'll say CTG train, or let me not say CTG, let me say DF3 is equal to CTG train dot. तो मैं ये सैम्पलिंग पता थी, सिर्फ तुम लोग ने सोचा नहीं. NSP equal to 3. ठीक है? Before I do this thing, let me do one thing. in CTG train you are having X and Y both as of now. दोनों है ना उसमें? So NSP dot value counts. 3 के कितने रिकॉर्ड हैं? 151 रिकॉर्ड है. It means DF3 में भी सिर्फ 151 रिकॉर्ड आने चाहिए, because I have set NSP equal to 3. So if I set DF3 dot shape, 151 रिकॉर्ड आ गए? Yes or no? Yes. जिसको अभी भी मेरे ऊपर डाउट है, कुछ लोगों को है, तुम क्या करो, इसकी जगह DF3 डाल दो. सो देख रहे हो, सिर्फ एक ही कैटेगरी आ रही है, DF3. करेक्ट?
एंड सिमिलरली इफ आई वांट टू टेक द रिकॉर्ड्स फॉर 2, मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा 2, यहाँ पे कर दूंगा 2, यहाँ पे कर दूंगा 2, 236 मैचेस विद दिस। अब एक काम करो, सब लोग प्लीज ये 2 लाइन का कोड ऐड करो। पहले कुछ सेल्स को ऐड करो और ये 2 लाइन का कोड ऐड करो। सिर्फ इतनी 2 लाइन ही करना, ना ज्यादा ना कम। एंड मेक श्योर तुम ये लाइंस ऐड कहाँ करो, लाइंस कहाँ पे ऐड करोगे? आफ्टर डूइंग योर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट।
No. So only thing is, I need to attach this thing in my CTG train. So what I'll do is, CTG train में भी कितने records हैं? 1700? Yes, no? Yes. So what I'll do is I'll say CTG train. अब ध्यान से देखना, जल्दी नहीं करना कोई, सब लोग प्लीज यहाँ पे देखो. So what I'll do, I'll say pd.concat. pd.concat will add my records. So किस में record add करने? I want to add my record in CTG train. Which record do I want to add? I want to add df3. So I'll say df3, comma df3. दो बार और ऐड कर देते हैं, एक बार और ऐड कर देते हैं, एक बार df2 ऐड कर देते हैं. So how many records were there in CTG train? 1700. Now after concatenation, the number of records should increase. बढ़ गए? Okay. पहले CTG train में ratio कितना था? This. Now if I say CTG train dot value count, इसको यहाँ पे copy कर लेते हैं and यहाँ पे डाल देते हैं. So the records for class 1 should remain same, and for 2 and 3 it should increase. So do you notice the records for class 3 have increased and records for class 2 have also increased? 1 के same है, उतना ही है, 1313. The records for class 2 have increased from 236 to 472. The records for class 3 have increased from 151 to 604. Record बढ़ गए, बाकी क्या, पूरा रन कर दिया. Now do you notice? Do you notice how many people actually belong to class 3? 25 people. And you are giving treatment to 20 people. 3 of them are being marked as suspect. जो suspect है उनका further investigation हो जाएगा. So only 2 लोगों की life थोड़ा सा risk पे जा रही है. Can you notice the big improvement coming for your class 3? Problem क्या था? Imbalance. Solution कहाँ से निकला? Oversampling. क्या मैंने टेस्ट डेटा में कोई छेड़छाड़ करी? छुआ भी नहीं. But still you can see the benefits coming on your test data also. Now go ahead and do it. जब ज्यादा कोडिंग करी नहीं तो क्लास में करोगे कैसे? वही ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग. एक सेकंड सब लोग, अगेन स्टॉप योर कोडिंग. Just look over here. See now guys, this is one thing where no one can help you. So I have added df3 3 times. There is no specific reason that I should add 3 times or 2 times or 1 time. That will depend upon your data and that will depend upon your requirement. So you add it 1 time, you do the testing and see how the results are coming.
If the results are not very good, you again increase it or you again increase it. Okay? So there is nothing like that I should add only 3 times. I could have added only 1 time, or I could have added 4 times or 5 times. Okay? Over here, there is no fixed or written rule. क्या करना है? क्या? कितनी बार है? 2 बार? पहले कितने बार? यहाँ पे कितना बार? What about you? Bedwa? उसके बाद पूरा कोड रन किया, यहाँ से फाइल रीड के नहीं रीस्टार्ट करो, यहाँ से फाइल रीड के वहां से पूरा रन करते जाओ। तुम लोगों ने ओवर सैम्पलिंग का स्टेप गलत जगह डाला है, आगे पीछे ऐसे ही आ नहीं रहा, ऐसे ही तुमने करा है, कहाँ डाला है? हाँ, कॉन्कैटिनेट कहाँ करा है? कॉन्कैटिनेट करा है, फिर से ये लाइन क्यों रन कर दिया? ये लाइन उठाओ ना, इस लाइन पे प्रॉब्लम आ रही है, वो लाइन तो ऊपर रन हो गई ना। कॉन्कैटिनेट कहाँ किया? अरे फिर से ये लाइन क्यों डाली? ये लाइन ऊपर आएगी ना भाई, तुम एमडी ट्रेन यूज कर रहे हो ना, तो ये लाइन ऊपर आएगी। हाँ, बस इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉपर ऑर्डर में ऐड होता है। क्यों अंडर सैम्पलिंग करें? ओवर सैम्पलिंग करो। अच्छा, सबको सबको ऐसा आ रही मैट्रिक्स? इज द मॉडल इंप्रूविंग आफ्टर ओवर सैम्पलिंग? अब एक मेरे क्वेश्चन का आंसर करो जो इसके बातों से निकल के आ रहा है। सो व्हाट शुड वी डू? शुड वी डू ओवर सैम्पलिंग नॉर्मली और अंडर सैम्पलिंग? क्या प्रेफर करोगे? इन दोनों में से तुम्हारा मन किसके लिए ज्यादा है, ओवर सैम्पलिंग या अंडर सैम्पलिंग? क्यों ओवर सैम्पलिंग? बिकॉज मैंने कर दी, एडिशन सिंपल है, डिलीशन और सिंपल है, रैंडमली हटा के रिकॉर्ड कर डिलीट कर दो।
ओवर सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग, विच मेथोडोलॉजी शुड बी प्रेफर्ड? थोड़ा और अच्छा रीजन दो। सिंपल मतलब क्या है, हटाने में ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन और लगेंगे। ये आंसर सही है तुम्हारा, गुड। सी गाइस, ओवर सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग, you can use both of them, but guys please बातें नहीं करो पीछे। Normally try using your oversampling. Why? Because in oversampling you are adding the data, ठीक है ना, you are adding the data, ठीक है। In undersampling what you are doing, in undersampling you are removing the data, so removing the data is your data loss. So data कम होता जाएगा तो मॉडल के अच्छे होने के चांसेस कम हो जाएंगे, right? But it is not always fixed that you need to do your oversampling also. Depending upon scenarios, the things can change also. You can combine also. So for example, let me say you have 1 million records. तुम्हारे पास 10 लाख रिकॉर्ड है. Out of these 10 lakhs, 9.9 lakh belong to class 0 and 10,000 and only 10,000 belong to class 1. If you are doing oversampling, guys, अब ध्यान से सुनो. If you are doing oversampling, then what will happen? Then you have to increase the records for class 1. जो records अभी 10,000 है, you may have to increase them almost 100 times or 70 times and 80 times. So if you increase the records of class 1 from 10,000 to, let me say, 9 lakhs or 5 lakhs, then total records will become around 9.9 plus 5 lakhs or 7 lakhs. कितना हो जाएगा? 17 lakhs or 18 lakhs. Correct? Then data will be very huge. And if data is very huge, the time taken for model to build would also be very huge. Right? So in this case, probably what you can do is you can reduce few records of your class 0 and you can add few records of your class 1. ठीक है? Suppose 1 crore record है and your class 1 was only 1 lakh and 99 lakh was for your class 0. Then probably oversampling may not be a very good solution. ठीक है ना? It may not be a very good solution. ठीक है? So if someone asks you oversampling or undersampling, say that I will prefer oversampling because I am adding the duplicates. In undersampling, I am removing the data, and removing the data is equivalent to removing the scenarios. So less number of scenarios would be passed to your model. So your model would be trained on less number of scenarios. And so obviously the chance of performance going down is more so. अब एक क्वेश्चन आता है, वैसे तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन डिसीजन ट्री में है. अब एक क्वेश्चन आता है, दिस मॉडल विच आई हैव क्रिएटेड, ये जो मॉडल तुम लोगों ने बनाया इतने प्यार से, was this model created on entropy or was it created on Gini? ये कैसे पता लगे? ये गिनी पे बना या एंट्रोपी पे बना, कैसे पता लगेगा? सोचो, यू गाइज ऑलरेडी नो कैसे पता लगाना है. कभी मेरे मुंह से ये सुना है शिफ्ट टैब सुना है? वर्ड शिफ्ट टैब का यूज करो. शिफ्ट टैब सुना है? शिफ्ट टैब क्या करता है? हेल्प विंडो खोल देता है. तो हेल्प विंडो खोलो और पढ़ो. पढ़ना आता है तो पढ़ लो. हेल्प विंडो खोलो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे हेल्प विंडो खोल लो. देखो डिफॉल्ट इज गिनी. अभी जो ट्री बनाया वो गिनी पे बना है. अब चल रहा है. ठीक है, अच्छा चलो ठीक है. So I think online में से किसी ने एक right answer दिया था. I missed his or her name, his name, sorry. I think he was Siddharth. अच्छा, now अब सब लोग अपनी कोडिंग को स्टॉप करो and let's discuss one more terminology which is not restricted to only decision tree
and you can expect some questions in your interview may be asked on this topic. Hyperparameter. वो डेटा साइंटिस्ट ही क्या जिसको हाइपर पैरामीटर नहीं पता? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अब दिखा? हाइपर पैरामीटर, और यू कैन से हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग. इसकी इंपॉर्टेंस को हाई मार्क कर दो प्लीज. ओके, हाइपर पैरामीटर और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग. बट बिफोर आई गो टू हाइपर पैरामीटर, व्हाट आर द पैरामीटर्स? पैरामीटर्स क्या होते हैं पहले ये बताओ, फिर हाइपर पैरामीटर. What do you mean by parameters in data science or in any model? So might the measurable factors to define a system. Siddharth, can you again repeat your statement? I missed. Sir, it is the measurable factor for defining a system or the to set the condition in any of the operations. Okay, so Siddharth says it's the measurable factors or conditions which can define. Okay, fair enough. Uska answer galat nahi hai, measurable factor. Okay. Can someone take an example of parameters? Example से सकते हो? Definition for the parameter. Hey, don't get confused with millimeter, kilometer, centimeter. इसका उससे कोई connection नहीं है. Parameters. What are the parameters based upon which you are evaluated, or what are the parameters which influence your knowledge? What are the parameters which impact your model? तो क्या होंगे? So can I say? नहीं, वो तो performance parameters हो गए. मैं model की बात कर रहा हूँ. So for example, let me say you are building a model Y. Then your x1, x2, x3 can be parameters. They can be parameters also. ठीक है? Your number of columns can be parameters. Number of columns can be parameters. Number of rows can be parameters. Data जितना ज़्यादा होगा मॉडल का जितना अच्छा हो जाएगा, right? Number of columns can be parameters. Number of rows can be parameters. So if there are two columns, let me say y and x1, then there can be some correlation between your y and x1. This can also be a parameter. अगर correlation ज़्यादा होगी between y and x1, then x1 would be kind of significant, right? So high correlation, positive correlation, or low correlation, all these things would be your parameters. So basically, whenever you get a data, suppose करो मेरे को ये CTG data मिला, then I had my few columns. I had my LB column, AC column, FM column, and I had my NSP column. So now, if the data is fixed, then the relationship between LB and AC is also fixed. उनकी जो correlation होगी वो change तो नहीं करेगी. Correlation between AC and FM, FM and NSP, all these things would be fixed. So parameters are these type of values which are fixed. ये change नहीं कर रहे. Now come to the hyperparameter. पहले समझो hyperparameter होता क्या है और hyperparameter tuning क्या होती है. As a data scientist, तुम्हारा काफी बड़ा टाइम ट्यूनिंग में जाएगा. कभी कोई चीज ट्यून की है? रेडियो कभी ट्यून किया है? गिटार ट्यून किया है? क्यों ट्यून करते हो? परफेक्ट अलाइनमेंट से क्या होगा? अच्छा म्यूजिक आएगा, राइट? अच्छा म्यूजिक को हम कह सकते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस आ जाएगा. सो सपोज व्हेन यू आर ट्यूनिंग द रेडियो, अगर कार वार में जा रहे हो सकता है थोड़ी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे सिग्नल वीक हो जाए. यू मे ट्राई टू ट्यून इट. So when you try to tune your radio, you are trying to get, or you are trying to catch that frequency which is best. उसने बोला गिटार अच्छा एग्जांपल है, so गिटार को ट्यून करते हो, ठीक है. Now the same thing will come for your hyper parameter tuning. So I want those parameters which make my model
best. So before you understand tuning, let's understand hyperparameter. ये आ कहां से रहे हैं और ये क्या होते हैं? So hyperparameters are the parameters hyperparameters are the parameters which are not part of the data and user can control it. सब लोग प्लीज ये लाइन को नोट डाउन करो. Note this line. Hyperparameters are the parameters which are not part of the data. Data का part नहीं है. And user can control it. Control it means user can change it. Change कर सकता है, tune कर सकता है. Any example? क्या लगता है hyperparameter को? So for example, let me say you have a data. You have a data, the number of rows, number of columns, they are fixed. You cannot change it. Suppose you have column x1, x2, x3, whatever you have y. So you cannot change the mean of x1 because वो तो given data है. उसका mean change नहीं कर सकते, उसका median change नहीं कर सकते. You cannot change the standard deviation. You cannot change the relationship between x1, x2 or x2, x3 and all those things. So ऐसे कौन से parameters हैं जो change हो सकते हैं? So will guys agree that all these parameters are part of the data, mean, median, standard deviation, सब data का part है. जैसे ही data मिला वो सारी चीजें fix हो गई, ये उसका part बन गई. You cannot change them. They are part of the data. तो ऐसी कौन सी चीजें जो change हो जाती है? Suppose linear regression build करिए. Y is equal to beta naught plus beta 1, x1 plus beta 2, x2 plus beta 3, x3 or whatever. ठीक है? Plus your error term. We will come to this part. ठीक है? Now, अभी एक example हमने लिया था. So I want to build my decision tree. Now it is my choice whether I want to build using my Gini or entropy. Is Gini or entropy part of your data? It is part of your data, but whether I want to use Gini or entropy, that is not part of my data. I can change it. ठीक है ना? I can change whether to build using your Gini or within your entropy. Can you notice Gini and entropy are not part of the data and user can control it also. So for example, जिसको अभी भी लग रहा है ये चीज, हम अगर यहाँ पे जाएं और हम यहाँ पे बोल दें, सपोज करो मैंने डिसीजन ट्री ऐसे बिल्ड किया था, राइट? सो व्हाट वाज द डिफॉल्ट वन वाज क्राइटेरिया वाज गिनी. मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा. डिफॉल्ट वाज गिनी, सो इफ यू डोंट गिव एनीथिंग इट वुड बी गिनी, बट आई कैन चेंज इट आल्सो. सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से उठा लूंगा एंट्रोपी, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे डाल दूंगा एंट्रोपी. So now my tree would be built using my entropy. So can you notice I can change the parameter and this Gini and entropy is not part of your data and user can control it also. So it becomes your hyperparameter. Just by seeing the data, can you tell me whether entropy will give me better model or whether this thing will give me better model? So for example, let me do one thing. Let me say dt fit, ठीक है, decision tree build. This time criteria was entropy. Same चीज build कर लें. So let me see मेरी confusion matrix कैसी आती है this time. Can you notice there is a little bit difference coming in the matrix? So 2, 3, 20 ये तो number same है. So this one is using your Gini और ये नीचे वाली using your entropy. This is same 2, 3, 20.
10, 38, 11, 9, 38, 12 चेंज हो रही है? Are the values changing? And then 28, 281, 40, 21, 286, 35 and 21. ठीक है, 286 हो गया, यहाँ पे 281 हुआ, right? So it means the performance is changing. So basically what will happen, I don't know that using entropy I will get the better model or using Gini I will get the better model. So what a person should do, person should build using both entropy also and using Gini also. And whichever model is best for your problem statement, use that model. अब समझ में आ रहा है, हमें ट्यूनिंग करनी पड़ेगी या तो एंट्रोपी या फिर गिनी, या तो 93.4 एफएम आ रहा है या 93.5 आ रहा है, ट्यूनिंग करनी पड़ रही है, राइट? सो यू हैव 2 ऑप्शंस और 3 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज बिटवीन देम और अमंग देम. इट मींस ट्यूनिंग करनी पड़ रही है. एंड व्हाट इज हाइपर पैरामीटर? दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डेटा एंड यूजर कैन कंट्रोल इट. गिनी एंड एंट्रोपी वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डेटा एंड यूजर कैन स्टिल कंट्रोल इट. ठीक है, सो कैन आई से criteria on which your tree would be built is acting like your hyperparameter? Yes, no, maybe. Yes. This beta naught plus beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, x4. Kya beta naught, beta 1, beta 2, beta 3 were part of my data? No. So can I call it to be a hyperparameter? फिर से देखो, y is equal to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus error. So was beta naught, beta 1, beta 2, beta 3 part of my original data? क्या वो original data के part थे? Answer is no. So can I call them to be hyperparameter? अरे हाँ या ना? हाँ, yes. सबका आंसर है गलत. They are not hyperparameter because hyperparameter के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? User can control it. You cannot pass the beta naught, beta 1, beta 2. वो तो कैलकुलेट होके मिलते थे. क्या तुमने मॉडल बिल्ड करते टाइम कभी ये बोला था कि इस वेरिएबल की स्लोप 2 होनी चाहिए, इसकी 3 होनी चाहिए? कैन यू कंट्रोल द स्लोप? यू कैन नॉट कंट्रोल द स्लोप. So beta naught, beta 1, beta 2, they are not part of the original data, but they are neither hyperparameter also. So hyperparameter के लिए both the conditions should be satisfied. They should not be part of the data and user should be able to change them. अगर change नहीं कर पा रहे हो तो वो hyperparameter नहीं. इतना समझ में आ रहा है? ठीक है. So दो examples के through याद रखो. One of the example of hyperparameter is criteria. Example of not a hyperparameter is your slopes. They are not part of the data, but you cannot control it. वो मॉडल बिल्ड होने के बाद कैलकुलेट होके मिलता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. डन. अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये ट्यूनिंग वगैरह क्या है, तो एक ही तो पैरामीटर है, 2 बार मॉडल बिल्ड कर लेंगे, एक बार गिनी से एक बार एंट्रोपी से, है ना? इसमें इतना क्या कर सकते हैं ना, अभी पता चलेगा कि ट्यूनिंग क्यों करनी है. So if you have only criteria as parameter, so let me say what are the 2 values criteria can take? It can take either Gini or entropy. ठीक है भाई, Gini and entropy ले लिया, so I'll build my model 2 times and I'll see which one is better. कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. But there may not be only one hyperparameter. Hyperparameters can be how many? They can be infinite also. जब तुम न्यूरल नेटवर्क में जाओगे ना, so the combinations of hyperparameters may be in millions. बहुत सारे hyperparameters निकल जाएंगे. अभी इसी डिसीजन ट्री में बहुत सारे hyperparameters आने वाले हैं and their combinations will result in
many models. ठीक है. अच्छा, now before I move any further, let me see. Let me say you are building a model. You are building a decision tree. तुमने एक ट्री ऐसा बिल्ड किया. Suppose करो this is tree A and this is tree B. ध्यान से सुनना. So what is tree? So at what is tree? Suppose karo, if you are building a tree on a COVID data set, then you said you took the first condition as age. You said if age is greater than 75, then true and false. For how many people the age is greater than 75, then let me say you are checking their blood pressure. If you have a blood pressure, then true and false. For the people who are less than age 75, you are checking whether they are greater than 60, let me say. So how many people belong to true and false? So do you notice that every split is nothing but one condition? हर एक split क्या condition है? In simple terms or not even simple terms, in real terms, you can say it is nothing but your if and else kind of condition. अभी याद करो हम लोग ने जब गिनी निकाला, remember if credit property area equal to urban or credit history equal to 0. So what is a tree? Whenever the tree is branching, each branch is created based upon a condition. A condition के ऊपर. So over here in this tree, I am checking one condition, second condition, and the third condition. And let me say your tree stops over here. So तीन condition check करके tree stop हो गया. It means your decision is based upon your three conditions. It is based upon your three conditions. Now come to over here. Tree A and tree B. ठीक है? In tree A, this is the one condition you are checking. This is another condition you are checking, and this is another. तीन condition check करें, and you are able to give your final predictions. Compare it with your tree B. Tree B में क्या हो रहा है? In tree B, you are checking so many conditions. In tree B, you are checking so many conditions. So will people agree that tree B is much more complicated? बहुत सारे condition check कर रहे हो. एक loan approve करना है तो तुमने in tree A you have checked three condition and you have approved. Fair enough. In tree B, how many conditions are checking? I don't know. बहुत सारे conditions check हो रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Don't you think unnecessary conditions check हो रहे हैं? Right. So basically, and probably in tree A, you are checking very few conditions. हम ऐसा भी कर सकते हैं. So neither, let me say neither A is good, neither B is good. Somewhere you want it in between. कुछ बीच का हमें मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए शायद तो काम बन जाए हमारा. Let me stop it over here. So probably let me say this is C, right? This is C. So probably A is it is very simple. This is very complex. And this is, let's say, best fit. ठीक है ना? So when you want to decide whether the person comes under the higher risk, you will check the age. You will check whether he has any comorbidity, whether he smokes or not, what type of lifestyle. You will check 5-6 parameters and then 20-30 parameters अगर check करने बैठोगे, then decision making would be very tough. And not only decision making would be tough, you would be running into a practice which is not good. Suppose करो
Let me say, when your tree starts, over here you have you have entire data. जब tree start होगा तो entire data होगा. Remember when we said that property area equal to urban, then all 10 people over here. बाद में 6 इधर आ गए थे, 4 इधर आ गए थे. ठीक है ना? So when you start building your model, entire data would be over here. So let's say 1000 people were over here. This was your full data. Then 700 यहाँ पे आ गए, 400, 300 यहाँ पे आ गए. Then when you do the splitting, you would be doing the splitting only on these 700. So let's say out of these 700, some 400 and 300 इधर आ गए. Then again you do the splitting. Let me say some 300 and 100 इधर आ गए. And again if you this split 100, let's say 50-50 इधर आ गए. And again if you do splitting, then 40 and 10 हो गया. Now if you split this 10, don't you think it is not a good thing? Your sample is very small now. Sample बहुत ही छोटा हो गया and still you are trying to do the splitting. So as your tree grows, your branching would be done on less and less amount of data. And if your sample is very less, then the chances of error will keep on increasing. इतना सबको समझ में आ रहा है? So can I say that neither a very small tree, neither a very large tree is good for my model? ना बहुत बड़ा पेड़ चाहिए, ना बहुत ही छोटा पेड़ चाहिए. जो काम का है वो चाहिए, you know, जो काम का है वो चाहिए. So it means there should be some criteria which can stop or which can control the branching of the tree. ट्री कितना बड़ा होना चाहिए वो यूजर कंट्रोल करना चाहिए यूजर को. So the branching also needs to be controlled. Is this idea getting clear? I don't want a very big tree. I don't want a very small tree. I should be able to control the depth of my tree. Ab note down karo, depth of the tree is another hyperparameter in your decision tree. Depth of the tree is another hyperparameter in your decision tree. दो वर्ड मैंने जानबूझ के तो यूज नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ी देर में मैं उनको यूज करूंगा. इंट्रोड्यूस द डाटा राइट टाइम एंड राइट टाइम जब आएगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा. Okay, so it means I should be able to control the depth of my tree. अब depth of the tree कैसे control करेंगे? Answer is very simple. हम shift tab का use करेंगे. हम पढ़ लेंगे भाई कौन सी चीज depth को control करती है. So maximum depth, default is none. Default is none. So what I'll do, I'll say maximum depth. हमने डाल दिया यहाँ पे 5. देखो मॉडल चेंज हुआ. सपोज करो मैं डाल देता हूं यहाँ पे 1. अब देखना मॉडल की परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाएगी. देख रहे हो, सिर्फ एक ही बार स्प्लिट हुआ और रुक गया. ठीक है. सो कैन आई से दिस मॉडल इज ऑफ नो यूज? उसने सब कुछ क्लास 1 में प्रेडिक्ट कर दिया. सो डू यू एग्री दैट डेप्थ का कुछ तो रोल है? अब 2 डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा होता है. थोड़ा नहीं, काफी अच्छा हो जाता है. 3 डालते हैं. एक काम करते हैं, इसको ना नोट कर लेते हैं भाई 2 पे कितनी है. अब देखते हैं 3 पे. 3 पे कुछ हुआ, 3 पे और गड़बड़ हो जाता है. ठीक है, तो अननेसेसरी ब्रांचिंग. लेट्स गो फॉर द 4. 4 पे वापस सही हो जाता है. ठीक है. सो डेप्थ का कुछ रोल दिखता है लाइफ में. ठीक है, वापस सही हो रहा है. सो यू कैन गो फॉर 2, 3, 5, whatever you should try. Now do you notice, as a person I don't know that what should be my depth, whether it should be 3, 4, 5, 6, and depending upon data to data the depth can keep on changing. Let me say if you have 20 columns, then depth should be at least 10 to 12. Why? Because अगर तुम्हारे पास 20-25 कॉलम है और तुम्हें लग रहा है सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं,
So do you notice at every split you can check only one column? एक split पे एक ही column तो check करोगे. तो अगर let me say if you have 10x column and your depth is only 2, it means you are checking only 2 columns. 2 या maximum 3 columns check करोगे. Entry रुक गया होगा. तो बाकी 10 का यूज ही क्या है? उनको हटा दो, बाकी 8 का. Right? So will people agree that depth also plays one role? Now अब देखो ट्यूनिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी. हाँ, अब देखो कि तुम्हें एक ट्यूनिंग पैरामीटर की जरूरत क्यों पड़ेगी. बिकॉज नाउ लेट मी से now you have two hyperparameters. One is your criteria. So criteria can take two values, either Gini or entropy. And let me say depth. You want to check your, please सब लोग ध्यान से सुनो. You want to check your depth either at 3 or 4 or 5 and 6. So total number of कितने हो गए? 4 हो गए. You want to check at 3 also, 4 also, 5 also, and 6 also. Now, how many different trees would be created? How many different trees would be created? अरे 4 क्यों? 8. So when you will take Gini and then you will check the depth as 3, 4, 5, 6. तो उसके बाद फिर तुम एंट्रोपी लोगे, फिर एंट्रोपी के साथ फिर से 3, 4, 5, 6 लोगे. तो कितने ट्री हो गए? 8 हो गए. अगर एक हाइपर पैरामीटर और डाल दिया तो 8 to the 16 हो जाएगा. समझ रहे हो? नंबर अब बढ़ना चालू हो गए. See, I see. Can you notice Gini with depth 3 would be one model. Gini with depth 4 would be another model. Gini with depth 5 would be another. Gini with depth 6 would be another. Similarly, entropy with depth 3 would be another. Entropy with 4 would be another. 5 would be another, and 6 would be another. I don't know that out of these 8 model, which one is most or which one is the best for me. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक एक्सेल शीट ओपन करनी पड़ेगी. तुम्हें 2 कॉलम डालने पड़ेंगे गिनी, फिर तुम्हें डालना पड़ेगा डेप्थ. नहीं, गिनी एंड डेप्थ नहीं, तुम्हें डालना पड़ेगा क्राइटेरिया, डेप्थ, एंड देन लेट मी से यू आर ओनली मेजरिंग द एक्यूरेसी. तो तुम डालोगे गिनी, डेप्थ वाज 2, accuracy was 80%, depth was 3, accuracy was 79%, depth was 4, accuracy was this much percent, 5. Similarly, you will go to entropy and then you will check for all of this thing. फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा. Then you have to decide which one is the best one. ठीक है, समझ में आ रहा है? So it means either you run your model manually 8 times and then decide which one is the best one, or you go for your what? You go for your hyper parameter tuning. या तो खुद से मैनुअली ट्यून करो या फिर अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प ले लो. So will people agree that hyperparameter tuning is required? Because I don't know that which combinations of the hyperparameter will give me the best result. ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक ले लो. After break you will see. After break you will see कि हम लोग ट्री को प्लॉट कैसे करेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग hyperparameter tuning कैसे करेंगे using SK nano whatever. फिर हम ये भी देखेंगे how to find the feature important. अच्छा, क्लास कितने बजे तक है? 2 बजे तक है ना. So take break till 12:40. Let's meet at 12:40. So after 12:40 also we'll have 1 hour 20 minutes.
क्या बात? हाँ। क्या कब है तुम लोग का मॉक? फ्राइडे को? कौन लेने वाला है? मैं ही लेने वाला हूँ। क्या है सिलेबस में? एक काम करो, सेम फर्स्ट वगैरह भूल जाओ, तुम लोग लॉजिस्टिक्स तक पढ़ के आओ। लॉजिस्टिक्स तक पढ़ के आओ, ठीक है? हाँ, लॉजिस्टिक तक जो भी पढ़ाया है सब कुछ। पहला दिन याद है, जिस दिन पहले दिन क्लास में आया था उस दिन से लेके लॉजिस्टिक तक पढ़ के आओ। खत्म। इसमें उत्कर्षा कुछ बोले या तुम लोग कुछ बोलो, उसमें मैं कुछ सुनने वाला नहीं, ठीक है? पढ़ के आओ। लॉजिस्टिक खत्म है, कितना टाइम हो गया? एक वीक हो गया ना? हाँ तो बस फिर ठीक है ना। और तुम लोग बोलते हो क्लास में घर में पढ़ के आते हो, जब घर में पढ़ के आ रहे हो तो फिर कॉलम किया दे दो मॉक। वैसे सभी लोग फेल होने वाले मॉक में, लिविंग वन और टू। बाद में देखेंगे ब्रेक के बाद। पहले दिन से लेके लॉजिस्टिक, रिग्रेशन, कंफ्यूजन मैट्रिक्स तक सब कुछ पढ़ते हो। सिंपल, दिमाग पे कोई लोड ही नहीं।
ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबके पास जुपिटर नोटबुक है जिसपे अभी कोडिंग करिए। ओपन इट। Okay, so can I say that people are clear with oversampling and people are clear with, I'll not say very much clear, but people have understood the basic idea or essence of what is hyperparameter, that your criteria entropy and Gini is acting as a hyperparameter, max depth is also acting as your hyperparameter, right? Now, let's do one thing. Feature importance using decision tree. Feature importance using decision tree. So what is feature importance or feature significance? Feature importance or the feature significance क्या होता है? हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा तो डिस्कस किया, राइट? फीचर इंपॉर्टेंस. So feature importance or the significance, can I have 1 or 2 line answer for it, please? Yes. So remember, हमने chi-square test introduce किया था, and I said whether gender is playing a role with your loan status or education, right? So feature importance, what is feature importance? So what I'm saying is there would be many X variable. There are many X variables and not all the X variables are of same importance. सारे के सारे variables की importance same नहीं है. They are not playing the same role, right? Some variables may be more important, some may be less important. So building the model is one thing, and finding the feature importance. If you find the feature importance, you can take the business decision that which feature is playing what type of role, right? So for doing your feature selection, it is very easy. What is the name of my model? यहाँ पे name of the model क्या है? DT_CTG, यही है ना मॉडल का नाम? बस इसको कॉपी कर लेंगे एंड हम बोल देंगे फीचर इंपॉर्टेंस. आ गई हमारी फीचर इंपॉर्टेंस. सब लोग प्लीज ये लाइन रन करो. आ रहा है? Are you getting these type of numbers? Yes, no, maybe. Online folks, guys, can I have a confirmation from them? Yes, sir. Yes. Okay. Now, do you notice that all these numbers are between 0 and 1? क्या सारे के सारे नंबर 0 and 1 के बीच में हैं? अगर हम इनको ऐड कर दें तो फीचर इंपॉर्टेंस एंड लेट मी से डॉट सम, आंसर 1 आ जाता है. So if you add all of them, the answer is 1. Now, what are these numbers? ये numbers हैं क्या और ये हमें बताते क्या हैं? So, can someone guess why I am getting 3 numbers? 3 numbers क्यों आ रहे हैं? 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं? Why only 3? No. Very close, but 100% wrong. बहुत पास, but पूरी तरीके से गलत. Why am I getting only 3 numbers? Why not 4? Why not 5? Why not 10? Why not 2? Why not 0? 3 ही नंबर क्यों आ रहे हैं? 3? No, फिर से पूरा गलत.
No. 3x variables. Yes, that's the right answer. You have 3x variables. You have 3x variable. Remember, I'm talking about feature importance. So feature importance to x की होगी ना. So since you have 3x variables, that is why you are getting 3 numbers. अगर 20x variables होते हैं तो यहाँ पे 20 numbers आते. आ रही बात समझ में? Because you are having 3x variables, that is why, or you are having 3 columns which are for x, LB, AC, and FM. Now, it is very obvious that 0.36 is mapped to your first variable, 0.47 is mapped to your second, and this one is mapped to your this thing. The values would be mapped to your order of your train x. जिस ऑर्डर में ट्रेन एक्स में कॉलम होंगे सेम ऑर्डर में इंपॉर्टेंस की कॉलम होंगे. इतनी बात समझ में आ रही है? सो एंड आई विल राइट वन मोर लाइन. हायर द वैल्यू मोर इंपॉर्टेंट इज द फीचर. ये याद रखो सब लोग. प्लीज नोट, मेक अ नोट. हायर द वैल्यू मोर इंपॉर्टेंट और मोर सिग्निफिकेंट इज द फीचर. Over here, it is very easy to make it out because you have only 3 features, right? But let's say you are building a model on the churn data where you have some 15-20 columns. Now what I'll do is I'll say सबसे important concept, which one is most significant? Can I say the most significant is your AC? AC बाबू सबसे significant दिखता है? Now what I'll do, let me create one data frame. Feature importance करके data frame create कर लेते हैं. And I'll say equal to pd dot data frame. Data frame create करने में तुम लोग को mastery है, ठीक है? I'll say features. Features कहाँ से आएंगे? Features will come from this thing. And where would the importance come? Importance will come from this thing. बना लो और उसको feature importance करके देख लो. Can you notice this type of data frame is getting created? ठीक है? Feature importance. So which feature? LB. So in front of every column or every feature, you will get the importance score. ठीक है? Line number 440. Is it clear to everyone? Creation of data frame. अब लोग सोचेंगे कहाँ 2 साल पहले क्रिएट किया डेटा, अब कहाँ याद है, भूल गए. Let me know once you have created this data frame. Done. Now, next time when I say create the feature importance data frame, everyone will create this type of data frame. ठीक है? आज बता रहा हूँ, आगे से I will expect that people would be able to create. ठीक है? Because this type of data frame is going to come very frequently now. It will come for random forest also and many other models. So feature importance means you will find the importance and create a data frame. Now, suppose let me say over here you have just three rows you have. So you can easily find that
you can easily find that which column is the most important. But suppose करो अगर 20 rows होते तो find करना मुश्किल हो जाता. Then what could I have done? I could have sorted this data frame. हम इसको sort कर सकते हैं, sort values, and I could sort it based upon, let me say, importance. I can sort it based upon the importance, and I can say ascending equal to true है ना, default is ascending. What I'll do, I'll make default as ascending as false. अब highest value on the top आ जाएगी. So if you present this data frame to the customer, to your technical team or whatever, the person will quickly come to know that the most significant is your AC, followed by LB, followed by F. LB, AC and F. थोड़ा सा बड़ा पिक्चर लो. Suppose करो you are building it on your churn data or credit risk. Then this type of data frame can quickly solve your problem or quickly give you an understanding that which feature would be most important. AC seems to be most important, followed by LB, followed by F. Any doubt, any question? इस कोड को आगे के लिए याद करके रखो प्लीज. ठीक है. एंड इन योर नोटबुक जहां पे तुमने नोट्स लिखे थे ना फॉर फीचर इंपॉर्टेंस, वहां पे लाइन एक ऐड करो. फॉर फीचर इंपॉर्टेंस you have said that you can use chi-square and ANOVA. वहां पे जाके लिखो I can also use decision tree. So तीन टेक्निक्स तुम्हें पता चल गई, chi-square, ANOVA and decision tree. जब रैंडम फॉरेस्ट करेंगे तब वहां पे एक और एंट्री कर देना, रैंडम फॉरेस्ट. So even decision tree can be used for your feature importance. अपने नोट्स को अपडेट कर लो. अब नोट्स अपडेट करने के लिए नोट्स बनाने होना भी जरूरी है. ठीक है. आई होप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें. Decision tree can also be used for your feature selection or the feature importance, and you have a proof in front of your eyes. अच्छा ठीक है. So we will go to hyperparameter tuning. थोड़ा सा देर में जाते हैं. First of all, let's discuss one more thing in decision tree. How to handle class imbalance. How to handle class imbalance. Automatically you can say how to handle class imbalance with inbuilt parameter. With inbuilt parameter. Okay. How to handle the class imbalance with inbuilt parameter, and probably now you can start using it in logistic regression अगर वहां पे है. ठीक है. अच्छा, before, as of now what I have done guys, I have already done the manual balancing. Remember, I have added df3 ये सब कर दिया ना. So class balancing तो already हो गई है, but मेरी वाली लाइन कहाँ चली गई? I think I removed it. Let's do one thing. सब लोग इतना कोड नीचे लेके आएंगे, यहाँ पर डालो. कोई जन या ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला एक बार कोड पेस्ट करेगा क्या चैट पे क्विकली? अदरवाइज मैं लिख भी लूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं. कर दिया? नहीं नहीं रुक जाओ. तुमने डाला है. सो लेट मी डू समथिंग. कोई जरूरत नहीं है. CTG ट्रेन, CTG टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, CTG कॉमा. ठीक है. एंड फिर क्या है, तुम हाँ क्या बोल रहे हो? डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं. अच्छा कैसे भाई, मैंने कभी ट्राई नहीं किया. हाँ एक सेकंड. हाँ नंबर
Okay, okay, ठीक है, that's a good thing. That's a good thing. I liked it. Let me see whether it works or not. वर्क तो नहीं करा, हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक करी हो. ओके, हाँ ठीक है, हो गया. थैंक यू. सो एस्केलेंट दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग. ठीक है. So let me run it from this top. Okay. See, now do you notice? So what I have done is, सब लोग please इतना कोड अपने लेवल पे कॉपी करो. So what I am doing is, I am doing my sampling, but I'm not doing any oversampling or undersampling. So do you notice the model अब जो आ रहा है थोड़ा गड़बड़ सा आ रहा है. It is again failing for class 3. So 14 plus 3 plus 14, so 28 plus 31. So out of 31 patient, you are able to identify only 14 patients which are pathological. So model seems to be failing. ठीक है ना? यहां तक करो and quickly confirm. Don't take more than 1 or 2 minutes. सिर्फ कॉपी पेस्ट करने को बोल रहा हूँ. और उसने तो कॉपी पेस्ट की और अच्छी टेक्निक भी बता दी. तुम लोग से थैंक यू भी बोल सकते हो. किसी ने नहीं बोला थैंक यू. किस किस का हो गया यहाँ तक? Okay, let's wait. Only copy paste your sampling code and run it and tell me, do you notice the problem of class imbalance? Is the model failing for class 3? And probably it is failing for class 2 as well. Class 2 के लिए भी थोड़ा सा fail करता हुआ दिख रहा है. Yes, ठीक है. So यहाँ पे 2 points मैं लिख देता हूँ before I introduce this thing. Class imbalance is there and no oversampling or undersampling was done. ठीक है, कोई ओवर सैम्पलिंग अंडर सैम्पलिंग हमने अभी तक नहीं करी. एंड ये मैट्रिक्स मेरी गायब हो गई थी. लेट मी कॉपी दिस थिंग. सो दिस सैंपल इज विद इम्बैलेंस. ये विद इम्बैलेंस है. अब क्या करना चाह रहा है? आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अ पैरामीटर विच कैन ऑटोमेटिकली हैंडल द क्लास बैलेंसिंग. बहुत सिंपल है. हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, इसका टैब ओपन कर देंगे और इसको चेक करेंगे क्लास वेट. इसको कॉपी करेंगे, यहाँ डाल देंगे और थोड़ा सा और सर्च करेंगे कि क्लास वेट हमारा करता क्या है. नीचे जाओ 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 जाओ. रीड द डॉक्यूमेंटेशन. क्लास वेट डिक्शनरी और द बैलेंस. ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी क्लास वेट इक्वल टू बैलेंस्ड. देखो मॉडल इंप्रूव हो गया. कंपेयर दिस मैट्रिक्स विद दिस मैट्रिक्स. कोई और चेंज किया मैंने? कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ एक पैरामीटर लगाया, क्लास वेट इक्वल टू बैलेंस. नाउ कंपेयर दीज टू. कैन यू नोटिस द प्रॉब्लम ऑफ मॉडल वाज फेलिंग फॉर क्लास 3? थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखता है. कंपेयर दिस नंबर 14 विद 22. देखो नंबर 14 विद 22 इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है. द मॉडल हैज improved. And also compare this 26 with 40.
कोई एक और चीज नोटिस करी तुम लोगों ने? जब तुम क्लास 2 और 3 के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हो तो 1 के लिए बेकार हो रहा है। अब याद आ रहा है SPR TPR, एक को संभालोगे तो दूसरा हाथ से निकलेगा, याद आता है? सो कैन यू नोटिस इफ यू कंपेयर, सो दिस वन इज with imbalance and this one is the above one is with balancing. Above one is with balancing. So can you notice the model improves if you compare this 26 with 40? पहले सिर्फ 26 के लिए सही दे रहा था, अभी 40 के लिए सही दे रहा है, राइट? पहले 14 के लिए था, अभी 22 के लिए है. Now from this 322 it has gone to 276. Can you notice? Can you notice the errors have increased from 11 to 43? देख रहे हो? So if you try to improve for one class, it will start to decrease for another class. जब रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिस्क अपने आप बढ़ने लगेगा. दिख रहा है लाइफ में? But at least in this model, whichever patients are pathological and they need treatment, at least you are giving them treatment. So 22 plus 5 plus 4, around 31 patients are there. Out of 31, you are giving treatment to 22. For 5 of them, you are saying they are suspects, so some further testing might be done. Kuch naye reports, kuch new blood tests, or whatever you will do. And for 4 of them, again, it is little. But we know that none of the model can be 100% correct. अगर डॉक्टर भी डायग्नोस करता है तो वो भी रिपोर्ट्स की बेसिस पे करता है, तो डॉक्टर के डायग्नोसिस भी रॉन्ग हो जाते हैं many times because there is no fixed thing, there is no guarantee. किसी को डेंगू है लेकिन ब्लड टेस्ट में डेंगू नहीं पकड़ पा रहा है, क्या करोगे? रिमेंबर, सारे सिम्टम कोविड के हैं लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ जा रही है. सो कहीं ना कहीं थोड़ी रैंडमनेस तो है. कोई बहुत वेट जिम कर रहा है लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है. किसी ने 2 रोटी खाई, वेट बढ़ गया. कोई पिज्जा पास्ता खा रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है. ठीक है. So a small amount of randomness or some amount of randomness would always be there. Okay. But somewhere we need to balance our model. Okay. So class weight equal to balanced. So you can say class weight equal to balance or not balance can again be a hyperparameter. Okay. Because this is also not part of your original data and user can control it. Okay, now give me 5 minutes. I'll try to plot a tree. तब तक तुम लोग एक काम करो. Try building your decision tree on credit risk model and tell me which feature is most important. कौन सा फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता लगा के बताओ. पॉसिबल है? अरे हाँ ना. ठीक है, डेटा क्लीनिंग तक तो ऑलरेडी है, उसके बाद वो उतना कोड कॉपी कर लो. बट डेटा क्लीनिंग एंड सैम्पलिंग सिर्फ डिसीजन ट्री वाला कोड इन्वोक कर दो. ठीक है. एंड बाकी सारी चीजें भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, योर फीचर इंपॉर्टेंस व्हाटएवर, राइट. लेट मी नो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कौन सा सबसे लीस्ट है. ठीक है. एंड इन मीन टाइम आई विल प्लॉट अ ट्री फॉर यू. पेड़ उगाने की बजाय पेड़ प्लॉट कर देते हैं. ठीक है. जस्ट गिव मी सम टाइम.
अब तुम लोग सबके एक्चुअली सबके लैपटॉप पे ट्री प्लॉट होगा नहीं, बट स्टिल अपना फर्दर कोशिश करना, ठीक है। ओ भाई, which is the most significant?
क्रेडिट हिस्ट्री कितना है उसका इंपॉर्टेंस? 0.36। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कितना है उसका वेटेज? 0.36 से 0.22। ओके, सो 0.58 एक्सप्लेन। नेक्स्ट कितना? 0.17। ओके, सो अराउंड 70 तक आ गया। नेक्स्ट कितना? 0.072, 7%। ओके, लीस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन अब यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है। लीस्ट इंपॉर्टेंट तो आ रहा है, बट वो ऑलरेडी एप्लीकेंट इनकम को तुमने बहुत हाई वेटेज दे दिया ना, एंड इनकम इज प्रोपोर्शनल टू एजुकेशन, तो उसने एजुकेशन को कम कर दिया। अब एक काम करो, एक मॉडल बिल्ड करो जिसमें एप्लीकेंट इनकम नहीं है। हाँ, एप्लीकेंट इनकम को ड्रॉप करो, देखो क्या होता है। क्या एजुकेशन की वेटेज बढ़ती है? उतना ही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? क्रेडिट हिस्ट्री और को एप्लीकेंट हटा दो। अभी भी इनकम आ ही रही ना, इनकम को एप्लीकेंट पे हटा दो। पति पढ़ा लिखा है तो वह भी पढ़ी लिखी होगी, कमा रही होगी, या वैसा वैसा। बोलिए, कंफ्यूजन मतलब डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्यों? हम डिस्प्ले कहाँ कराते हैं? आ गया? बिकॉज एजुकेशन इनकम वाज ऑलरेडी बेस्ड ऑन एजुकेशन, तो तुमने जब इनकम ले लिया तो एजुकेशन को उसने हटा दिया। जब इनकम तुमने हटा दी तो एजुकेशन ऊपर आ गया। इससे क्या सीखा? डेटा हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, जैसा जिसको देखना है हम उससे उसको दिखा देंगे। ठीक है? हाँ, तो कंसिस्टेंट नंबर डालो। तुमने एक में ट्रेन एक में टेस्ट डाला है। हाँ, झंडा हो जाता है। हाँ, हाँ, मॉडल खराब भी हो गया होगा शायद थोड़ा। नहीं नहीं, खराब मीन्स कंफ्यूजन मैट्रिक्स थोड़ा सा खराब आ रही होगी, एक्यूरेसी वगैरह कम हो गई होगी। देखो, हम्म, ओके, 10 क्या हुआ? मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा, हाँ हिंट जरूर दूंगा। आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। हाँ, हाँ, 426 2126 क्या लगता है? एक में 426 रिकॉर्ड है, एक में 2126 रिकॉर्ड है, तो कैसे बिल्ड होगा? क्या तुम एक डेटा फ्रेम ऐसा बना सकते हो जिसमें 10, जिसमें जिसकी एक कॉलम में 10 रोज हो, दूसरे में 20 रोज हो? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो चेक करो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स किस पर बन रही है। हाँ, तो इससे चेक करो पीटीजी टेस्ट में कितने रिकॉर्ड है, पीटीजी टेस्ट वन कितने रिकॉर्ड है, कितने रिकॉर्ड है, दोनों में चेक करो, दोनों में चेक करो। कौन नहीं करोगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, खुद को सॉल्व करना है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम कैसे सॉल्व करोगे? हिंट तो दे दिया ना। इस पे शेप फंक्शन रन करो, इस पे शेप फंक्शन रन करो, देखो किसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, और चेक करो कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना? अब सॉल्व से वैसी प्रॉब्लम करूंगा जो बिल्कुल न्यू होगी। ये ओल्ड प्रॉब्लम है, 2 साल पुरानी प्रॉब्लम है ये।
Okay, now let's do one thing, guys. Let's try to understand our confusion this tree. Acha, everyone stop whatever they are doing. Try understanding the tree. Tree ये आया कैसे भूल जाओ. बाद में इसका कोड रखेंगे कि ट्री कैसे आएगा. But how to understand this type of diagrams? Very simple, but शुरू में शायद थोड़ा सा एफर्ट लगेगा. ठीक है, ये एक ट्री आ गया है. मैं एक काम करता हूँ, इस ट्री को थोड़ा छोटा कर देता हूँ. कैसे छोटा करूंगा? यहाँ पे डेप्थ कम कर देते हैं. छोटू सा ट्री आ गया, दिखने में प्यारा है. इसको कट कर लेते हैं. पेन विंडो इज विजिबल. ठीक है, पेन विंडो इज विजिबल. So whether your tree is small or whether your tree is large, the way you interpret would always remain the same. ठीक है. So this is my tree, decision tree, or you can say tree based models हैं हमारे. First thing is this tree is always interpreted, or you can say this tree, the way you read is always from top to bottom. कोई नीचे से ऊपर नहीं जाएगा. It is a crime. Always top to bottom. ये एक लाइन नोट डाउन कर लो. Always from top to bottom. ऊपर से नीचे. अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो, you are making a big mistake. पूरा इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा. Always from top to bottom. Always from top to bottom. एंड इसको कुछ वैसे समझते चलो. सपोज करो कल को तुम थोड़ी हाई पोजीशन पे आके कोई तुम्हारे सामने एक ट्री लेके आया है, तो कम से कम पढ़ना तो आना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज वो तुम्हें कुछ भी समझा के चला जाएगा और तुम वही ऊपर वाले को समझा दोगे. ठीक है, ऐसा होता है. मैं कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा, मेरी लाइफ में बड़े अच्छे अच्छे होंगे. ठीक है. अच्छा, नाउ दिस इज नोन एज योर रूट नोड. जो सबसे ऊपर वाला होगा दैट वुड बी नोन एज योर रूट नोड. रूट मींस ट्री यहां से स्टार्ट हो रहा है. इट इज स्टार्टिंग, यहां से बिल्ड होना चालू हो रहा है. ट्री एंड कहां पे हो रहा है? इट इज एंडिंग ओवर हियर. जहां पे एंड हो रहा है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल नोड. ट्री टर्मिनेट्स ओवर हियर, टर्मिनल नोड. एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनल नोड. बीच में जितने भी हैं, they all are known as your leaf node or branches or whatever you can say. They are known as your leaf node. If you remember these terminologies, it is good. If you don't, it is still okay. Main thing is you should be able to interpret that. Okay. So the first node is your root node, where your tree is growing, your tree is starting, and then all the in between are your leaf node. Wherever your tree ends, it is known as your terminal node. It terminates, it ends, खत्म होता है. It is known as your terminal node. ठीक है. Now let me go to the another print window. यहाँ पे वापस पेस्ट शुरू करते हैं. अच्छा, terminal node. Tree is always read from top to bottom. ऊपर से नीचे. Now, अच्छा, before the break or at the starting of the class, remember I had taken an example. I had said if property area is equal to urban, if it was true or if it was false. Correct? याद आता है? So basically what it is doing, it is checking the one condition. Can you notice that it is checking AC? What is AC? AC is the name of my column. LBACFM. याद आ रहा है? It is checking if AC, the condition it is checking is if AC less than or equal to 0.001. And the Gini score it has calculated is 0.374. 0.374. Sample size is 1700. 1700 को कुछ ऐसे समझो. Let me share the entire screen. Entire screen is shared है.
What is 1700? 1700 is total number of records in your train data. Model किस पे build किया हमने train data पे? Can you notice in CTG train X model कहाँ पे build किया? मैंने यहाँ पे build किया and I will say CTG train X dot shape. Can you notice the records were 1700? Same thing you are noticing it over here. 1700. Is everyone clear what is this 1700? Now, can you notice that there are three numbers 1316, 239, 145. This is nothing but the count of your Y variable. In your Y variable, if I say CTG train Y, and if I do value counts, can you notice 1316, 239, and 145? Do you see the same numbers over here? 1316, 239, and 145. So it is telling at the starting what is the position. It is telling that there are 1700 records. Out of 1700 records, 1316 belong to target variable 1, 239 will belong to NSP equal to 2, and 145 belong to NSP equal to 3. So basically what this decision tree would have done, decision tree would have calculated the Gini for AC, Gini for LB, and Gini for FM with respect to your NSP. And wherever the value was least, it would have taken as your first node. AC, it is saying AC is equal to 0.001. Now let's check what is the range. What is, so if I say CTG dot AC, देखते हैं उसके values कुछ ऐसे ही आते हैं 00, 001, 007. If you find the mean also, so mean may also be somewhere around something 0.0031, right? So it is saying AC less than or equal to 0.001. If this condition, what is this? This is nothing but a condition or the splitting condition. If this condition is satisfied, that is your true and it is your false. अच्छा, can you notice true and false उसने सिर्फ एक ही बार लिखा है, बाकी कहीं true and false नहीं लिखा. It is a convention. It means left side में true है और right side में false है. Okay, left side में true, right side में false. उसने एक बार लिख दिया, आगे खुद से समझना. ठीक है. So now again this would be true and this would be false. This would be true, this would be false, 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 this would be true, and this would be false. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? Left side में true and right side में false. Actually vice versa करता तो ज्यादा better था, but ठीक है, मैंने भी तुम लोग को ऐसे ही समझाया है. ठीक है, true and false. So at the starting, at your first node, let me not say first node, let me say it at your node number A, there are 1700 records. Out of 1700 record, 1316, 239, and 145 are the representation of NSP equal to 1, 2, and 3. The condition which is checking is 0.001. So if it is true, you come to the left side. So out of 1700 records, your 714 come to left hand side and 986 come to your right hand side. जरा 714 and 986 को जरा ऐड करो, देखो क्या 1700 वापस आ जाता है, आता है ना? yes. तो अगर 1700 को स्प्लिट करो तो 714 are going towards your left, 986 are coming towards your right side. आ रहा है समझ में? Out of 714 records which were satisfying this condition AC equal to 0.001, 390 belong to इसको 390 belong to your NSP1, 202 belong to NSP2, 122 belong to, मैं तुम लोग को for more understanding let me explain this number, जिसको लग रहा है कि ये नंबर सही है कि नहीं, just for explanation purpose. So what is AC less than or equal to 001? Let me say example data frame. अरे भाई समझ जा. तुम लोग को कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट गिव अ लुक. सो आई विल से CTG मॉडल किस पे क्रिएट हुआ है? ट्रेन पे, राइट? CTG ना अब कैसे? सो अच्छा यहां से उठा लेते हैं हम लोग CTG ट्रेन से उठा लेते हैं. सो एग्जांपल CTG ट्रेन
And then what's the condition I'm checking? AC less than or equal to this. So CTG train dot AC less than or equal to 0.001. So now what I'll do, I'll say this dot NSP dot value counts 483, 219 and 129. देखो वही सेम नंबर आ रहा है, नहीं थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्यों आ रहा है? 390 नहीं, पहले इसका सैंपल साइज 714 होना चाहिए। देखें इसका सैंपल साइज कितना आ रहा है। सैंपल साइज 831 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? अच्छा, हो सकता है ना मेरा ट्री चेंज कर दिया हो। मैंने इसको एक बार अगर रन कर दिया होगा ना, ट्री चेंज कर दिया होगा। अब देखो कितना आ रहा है, 404, 194 एंड 115। अब देखें यहाँ पे कितना आता है, 404, 194 एंड 115। यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? ये सही करा है मैंने। CTG ट्रेन AC लेस देन और इक्वल टू 0.001, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0.001, AC लेस देन इक्वल टू 0.001। सो यहाँ पे जो वैल्यू काउंट्स आना चाहिए NSP का, इट शुड मैच 499212। यहाँ पे मैच क्यों नहीं कर रहा? ये दिस इज 404194, सैंपल साइज इज 713, AC लेस देन और इक्वल टू 0.001। यहाँ पे मैंने सही डाला है, CTG ट्रेन X DT CTG आउट। देखो एक सेकंड, इसका बता देते हैं ये अब कितना आ रहा है? 403, 201 एंड 403। आई थिंक मैं यहाँ पे कुछ क्या करना चाहिए? AC लेस देन और इक्वल टू 0.001। यहाँ पे हमने कंडीशन ली है AC लेस देन इक्वल टू 0.001, 1700 रिकॉर्ड। सो CTG ट्रेन में तो 1700 रिकॉर्ड आ रहा है। ये फर्स्ट वाला नंबर तो मैच कर रहा है, 1318, 236 एंड 146, 1318, 236, 146, ये तो मैच कर रहा है। बट 403 वाला मैच क्यों नहीं कर रहा? सैंपल साइज वो बोलता है सैंपल साइज वो बोलता है 725 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। 725 एंड 971, 975 क्या है, ऐड हो रहे हैं 1700 को, राइट? 725 एंड 975 दे ऐड अप टू 1700, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। जो ट्री हमें बिल्ड कर रहा है, एक्चुअली पता क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे डेप्थ लगाई ना, तो शायद उसने कंडीशन चेंज कर दिया है। मैंने यहाँ पे डेप्थ लगाई नहीं है, बट अगर डेप्थ नहीं लगाऊंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। डेप्थ नहीं लगाऊंगा ना तो ट्री क्या होगा ना, इनफाइनाइट ट्री आ जाता है, बहुत बड़ा ट्री आ जाएगा, सिस्टम हैंग करने लग जाएगा। इट इज टेकिंग ह्यूज टाइम। देख रहे हो कितना बड़ा ट्री आया? इसको मैं क्लिक करूंगा ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। ठीक है, एनीवे हम इस पे वापस जाएंगे। हम यहाँ पे डेप्थ को कंट्रोल कर लेते हैं। देख रहे हो कितना बड़ा ट्री आ रहा है? और एज अ ह्यूमन बीइंग पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट इज जस्ट अनएंडिंग। वेरी बिग ट्री, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम डेप्थ लगा देते हैं। कहाँ गया? मैक्स डेप्थ इक्वल टू 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैक्स डेप्थ इक्वल टू 3 करा,
अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे कुछ हल्का सा मैं कुछ मिस कर रहा हूँ. CTG ट्रेन AC लेस देन और इक्वल टू 0.001. यहाँ पे कंडीशन क्या दी है हमारी? AC लेस देन और इक्वल टू, ये कंडीशन सही दी है ना मैंने यहाँ पे? लेस देन और इक्वल टू, लेट मी से ग्रेटर देन 0.001. 83926. give me this thing. NSP. ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं. सो सबसे पहले हमने ये कंडीशन चेक करी, कंडीशन नंबर 1. सो आई थिंक डेप्थ की वजह से कुछ वो इशू दे रहा है, नंबर्स थोड़े से इधर उधर से उधर जा रहे हैं, बट फेयर इनफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आउट ऑफ 1700 रिकॉर्ड, ये 1316 बिलोंग्स टू NSP इक्वल टू 1, and then NSP equal to 2, NSP equal to 3. Then these 1700 are split into 714 and 986. Among 714 records, 390 belong to NSP equal to 1, 202 belong NSP equal to 2, and 122 belong NSP equal to 3, right? And then again you are splitting. This 714 records are being split into 413 and 301. इनको अगर चेक करोगे देखो वापस इतना ही आ जाता है. 413 प्लस 301 कितना होता है? सेम आ जाएगा, 714. Now what is the splitting condition? Splitting condition is 136. The splitting condition is your 136. Okay. So if LB is less than or equal to 136, if LB is less than or equal to 136, there are 413 records which satisfy this condition and 301 records which are not satisfying this condition. So from cell number A, you come to cell number B and you come to cell number C, and then you come to, let's say, cell number D. For going to cell number D, what you will do? You will say out of 413 patients, again you are checking your FM condition. If FM is less than or equal to 0.217, 403 record belong to, or 403 records satisfy this condition, and 10 record do not satisfy this condition. Again, if you add 403 and 10, you get your 413. एक काम करता हूँ, इसको ना मैं वापस एक बार पेस्ट करता हूँ इस ट्री को, और लेट्स मी रिकैप इट एवरीथिंग. अब ध्यान से सुनना, अगर अभी तक किसी को समझ में आया, इस बार पूरा समझ में आ जाएगा. Again, you read your tree from top to bottom. This is your root node. This is your terminal node. So it means if this is your cell number A, cell number B, cell number C, cell number D. अगर तुम्हें सेल नंबर D तक आना है तो तुम्हें पहले A पे आना पड़ेगा, फिर B पे, फिर C पे, फिर D पे. Right? There is no other way. तुम बीच में तो जंप नहीं कर सकते. Right? Similarly, if this is A, B, C, D, and this is A, B, C, D, and let me say E, let me say F, and G, and H. If you have to come to cell number H, then you have to take the path from A to B and E, and then only you can come to H. What is H? H is your terminal node. Terminal node where your tree ends. It means जब tree end करेगा तो एक decision भी देगा. भाई आखिरी में तुम्हें बताना है ना whether patient will belong to NSP equal to 1, 2 or 3. So at your terminal node, decision would be made. Decision would be made. So G, H, and let me say I, J, K, L. So your D, G, F, H, I, J, K, and L. All these nodes, at all these nodes, your decision is being made. Decision ले रहा है. So decision being made, it means you are telling the patient whether you are normal, suspect, or pathological. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? Now let's. So if I have to make a decision at point number D, then I have to travel from A to B, then B to C, and then C to D. So at point number A, what is the condition? Condition is AC is less than or equal to 0.001. If this condition is true, then you will come to B.
At B, what you are checking the condition? If LB is less than or equal to 136.5. If this condition is true, then you come to C. At C, what you are checking? You are checking if FM is less than or equal to 0.217. If this condition is true, then you come to your point number D. At point number D पे क्या कोई condition check हो रही है? नहीं हो रही. देखो. At point number D, is any condition being checked? No. क्या point number G पे कोई condition check हो रही है? Last के सारे notes को देखो, क्या कोई condition check हो रही है? नहीं. Condition इसलिए check नहीं हो रही because तुम कंडीशन चेक करते करते लास्ट नोड पे आ गए. अब तुम्हें अपना डिसीजन बताना है. पढ़ाई खत्म, अब रिजल्ट की बारी आ गई. ठीक है ना? All the conditions have been checked and now you are ready with your decision. ठीक है? So again, let me recap. So at point number D, how many patients are there or how many people are there? Can I say 402 people are there? At point number D, there are 402 people. For all these people, AC would be less than or equal to 0.001. For all these 402 people, LB would be less than 136.5 or FM would be less than 0.217. अब wording change कर देता हूँ. If your AC is less than or equal to 0.001 and if LB is less than or equal to 136.5 and if your FM is less than or equal to 0.217. So there are 402 patients which satisfy this condition. ऐसे 402 लोग हैं जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. And remember, मैंने and बोला है और नहीं. I hope people know the difference between and or. And if AC is less than this, LB is less than this, and FM is less than this, there are 402 patients which satisfy this condition. Out of these 402 patients, 279 belong to NSP equal to 1. 41 belong to NSP equal to 2 and 82 belong to NSP equal to 3. अब मैं वापस एक स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं. If AC is less than or equal to 0.001 and what is FM? FM is less than or equal to 136.5 and नहीं LB. अच्छा, LB was 136.7. अच्छा, तो मैंने 136 लिखा. LB is less than or equal to 136.5 and FM is less than or equal to 0.217. If AC is less than this, LB is less than this, and FM is less than this, then there are 402 such patients. Out of 402 such patients, 279 belong to NSP equal to 1. 41 belong to NSP equal to 2 and 82 belong to NSP equal to 3. So what is this 279? The ratio of 279 would be 279 upon 402. Correct? Ratio of NSP equal to 2 would be 40 upon 402 and this would be 82 upon 40. Jaldi se please the answers batao after 3 digit till decimal. Correct answer बताना 3 digit decimal. Zero point 0.694 सेकंड वाले का 0.101 और इस वाले का फिर 0.2 कुछ आ जाएगा 0.203 बराबर है. नंबर्स बराबर है. ठीक है. अगेन लेट मी rephrase my statement. If AC is less than or equal to 0.001 and LB is less than or equal to 136.5, FM is less than or equal to 0.217, then there is 0.694 probability that you belong to NSP equal to 1. There is 0.101 probability that you belong to NSP equal to 2, and there is 0.203 you belong to NSP equal to 3.
एंड फाइनल आंसर वुड बी बेस्ड जहां पे तुम्हारी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी. रिमेंबर, इट इज नॉट गारंटेड कि that all the people who satisfy this condition would be belonging to a same class. जरूरी नहीं कि सारे पैथोलॉजिकल होंगे, जरूरी नहीं कि सारे सस्पेक्ट होंगे या सारे नॉर्मल होंगे. ठीक है, you have a high fever, you have vomiting or whatever, you may have diarrhea or you may have COVID also or whatever, right? So it doesn't mean that if all these symptoms are there, then you are infected with the same disease. किसी को हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता, right? But you will get the answers in your probabilities. अब जब डॉक्टर ये देखेगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा कि what is the scenario. सबको समझ में आ रहा है? Now can you do one thing for me? Let me take a little difficult path for you. GHIJKL हो गया था ना, let me say MN. I want to read this path. ये वाला पाथ को रीड करके बताओ. जल्दी में मत बताना, पहले अपना नोट क्रिएट कर लो and then tell me how the decision would be based for this path. ऊपर से नीचे ही आओगे, स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही है सबका. So I will say AC is less than or equal to 0.001. क्या सही बोला मैंने, गलत बोला? Do you notice इस बार false में जाएगा. If AC is greater than 0.001, correct, and if AC is less than 0.003, and if LB is less than or equal to 0.129.5, then there are 58 such patients which satisfy all these three conditions. Out of 58 such patients, 57 belong to class 1, 0 belong to class 2, and 1 belongs to class 3. अब खुद से सोचो, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, then it is a very high chance that a patient is a normal patient. Out of 58 patients who satisfy all these three conditions, 57 तो normal है. Chances of being pathological is very less. तो अगर तुम्हारे ये सारे parameters satisfy हो रहे हैं, then you can be very much assured that you are in a normal category. और chances of being normal are very high. है ना? I hope लोग एक चीज ये समझ में आ रही है लोगों को, whether it is medical data or any data, we always talk in terms of probability and chances, क्योंकि गारंटी तो किसी चीज की नहीं. अगर तुम एक दुकान भी खोल रहे हो तो तुमने अपने चांसेस भी तो निकाले कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं, वो तो खोलने के बाद पता चलेगा. अगर अंबानी के बेटे हो तो चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा है, ऐसा ज्यादा होगा. गरीब का बेटा है तो फेलियर के चांसेस ज्यादा, कोई बड़ी मछली खा जाएगी. ठीक है, so keep one thing in mind, we always work on chances or probabilities, there is nothing guaranteed. ठीक है, and this is how you will bring your बेस करेंगे ना बिल्कुल, अदरवाइज तुम लोग कैसे करोगे. पहले बताओ, ट्री समझ में आया, पढ़ना समझ में आया? अगर पढ़ना समझ में आया तो मेरे को एक चीज और पढ़ के समझाओ तुम लोग. इस बार मैं किसी का नाम लेने वाला हूँ, वो समझाएगा ट्री. समवन, किसी को ये वाला पाथ एक्सप्लेन करना, ए बी सी एंड ई, ये वाला पाथ एक्सप्लेन करना. कौन समझाएगा? लेट मी कॉल आउट सम पर्सन. नहीं तुमको, तुम बताओ, तुम बहुत दिनों बाद क्लास में आए, यू गिव इट. So if AC is greater than or equal to 0.0, it go down to 3. In that case,
AC is less than equal to 0.03. एक काम करो, 2 मिनट और लो, पहले माइंड में अपना लॉजिक बिल्ड करो एंड देन स्पीक, डोंट बी इन मच हरी। डू वन थिंग, अगर लिखना है तो 2 लाइन लिख लो अपने नोटपैड या व्हाटएवर एंड देन ट्राई एक्सप्लेन इट। पहले वो एक्सप्लेन कर ले, अभी वो एक्सप्लेन करने जा रहा है, तुम उसके चांस छीन लो। Not give attempt. AC is greater than equal to 0.01. If it matches this condition, then it will go down. After that, if AC is greater than 0.003, Okay. That if LV is less than 111.0, will go down. And then if VI and CV is less than Okay, Vaishnavi, you go ahead. Okay. And when AC is greater than 0.003, then we go to see in this condition that and B is less than equal to 1/1. Okay, and E पे फिर क्या होगा वो तो बताओ। हाँ, क्या डिसीजन लेंगे और एक्सप्लेन करो ना। इंग्लिश हाँ, इंग्लिश में सही। It's not 12, I think it's 17. 17 है वो। Okay. Okay. ओके, ठीक है। टेक्निकली तो ठीक है, थोड़ा और अच्छा ह्यूमन टर्म्स में थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेन करना चाहिए था। ओके, तुम बताना चाह रहे हो, बताओ। ऐसा एक्सप्लेन करो सामने वाला इंप्रेस हो जाए। उसका एक्सप्लेनेशन टेक्निकली ठीक था लेकिन इंप्रेशन नहीं पड़ा। ओके ओके then if a 17 record for the people, in that 17 people, get that 12 are normal patients. Okay. Value 0 are suspect, and 5 are pathologists. In here, the chances of the normal people are more. राइट, ठीक है। सो इसने किसी को लगता है और अच्छा समझा सकता है, बड़ा प्यारा समझा दे। अच्छा चलो एक बार मैं वापस बोलता हूँ, तुम लोग अगर वो वर्डिंग्स पिक करना चाहो तो पिक करो। सो एट द स्टार्टिंग देयर आर 1700 पीपल, आउट ऑफ दोस 1318 बिलोंग टू NSP1, 236 belong to NSP2, 146 belong to NSP3. Condition I am checking is 0.001, AC less than 0.001. If this condition is false, which means if AC is greater than 0.001, there are 975 such people. On those 975, I am checking the condition AC
greater than 0.003. If AC is greater than 0.003, then there are 748 such people, right? On those 748 people, I am checking if LB is less than or equal to if LB is less than or equal to 111, right? If all these three conditions are satisfied, where AC is greater than 0.001, and then your this thing, AC is greater than 0.003 and LB is less than or equal to LB is less than 111. Then there are 17 such people which satisfy all these three conditions. Out of 17 such people, 12 will belong to category normal, 0 will belong to category suspect, and 5 will belong to category equal to pathological. So their respective probabilities would be 12 by 17, 0 by 17, and 5 by 17. So if all these three conditions are satisfied, then there is 12 by 17 chance that you belong to normal category, 0% chance that you belong to suspect, and 5 by 17 chance that you belong to pathological. ये है probabilities. तुम्हारा क्वेश्चन भी शायद आंसर हो गया. ये वैल्यू कहां से आई? ये वैल्यू कहां से आई? ये वैल्यू सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट करी. सपोज करो तुम्हारे पास एक डेटा है LB, AC, FM and NSP. ठीक है. नाउ यू वांट टू बिल्ड योर ओन ट्री. तो तुमको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा. आई कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन LB and NSP. I can take the mean of LB and I can build the relation. How many people belong to LB with less than mean, or how many people belong more than mean, right? Similarly, I can build with my AC and NSP, FM and NSP. ठीक है. अगर ह्यूमन बीइंग करने बैठेगा तो सिर्फ ये ट्री बनाने में शायद उधर का 2 दिन जाएंगे. ठीक है. बट वो सारा काम सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट करके तुम्हें दे दिया. सो ये कहना कि उसने कैसे कैलकुलेट करा, इट इज इम्पॉसिबल. उसने अपने बहुत सारे नॉर्मली उसने क्या किया होगा, इट वुड हैव फाउंड दी योर गिनी बिटवीन AC and NSP, LB and NSP and FM and NSP. जहां पे गिनी उसे सबसे कम लगा उसको उसने टॉप नोट डाल दिया. ऊपर वाली वैल्यू मीन्स AC तो तुम्हारा वो है ना, वेरिएबल नेम है ना. हाँ, तो उसको फर्स्ट नोट लिया जाएगा, तो इसलिए लिया उसको फर्स्ट, क्योंकि इसका सबसे कम है. करेक्ट. जिसका गिनी सबसे कम होगा सबसे ऊपर आएगा. FM. तुम बोलो AC की वैल्यू 0.001 कैसे है? ये बोलना तो मेरे लिए मुश्किल है. सी अकॉर्डिंग टू मी समवेयर द मीन ऑफ AC में बी अराउंड 0.001. तो उसने शायद मीन या मीडियन से पहले कंपेयर करके देखा है. सो हम एक चीज करके देख सकते हैं कि लेट मी से CTG ट्रेन AC, इसका मीन कितना है या मीडियन. सो वैसे तो इसका 0.0031 आ रहा है, या मीडियन कितना आ रहा है, पॉइंट कुछ ऐसे ही आ रहा है. सो उसने एक कोई तो वैल्यू उठाई. सी बेसिकली नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर कर रहा है ना, इट इज नाउ यू कैन नॉट इंटरप्रेट कि उसने क्या लॉजिक लगाया है, कि एग्जैक्टली उसने कौन कौन से वैल्यूज को कंसिडर किया होगा फॉर फाइंडिंग दिस थिंग. बट प्रॉब्ली इट इज ट्राइंग मेनी वैल्यूज एंड देन एट द एंड इट इज बिल्डिंग द मॉडल यूजिंग द बेस्ट फिट वैल्यू. ठीक है.
तो वो इंटरप्रिटेशन कभी तुम नहीं देख पाओगे, वो सॉफ्टवेयर के अंदर का है, ठीक है। बट जो लीस्ट, सो बेसिकली देखो, इन अ वे सॉफ्टवेयर ने क्या करा होगा, उसने गिनी निकाला होगा बिटवीन योर AC एंड NSP। आइदर इट वुड हैव टेकन योर, सी बेसिकली उसने कैसे करा होगा, इट वुड हैव टेकन योर समवेयर अराउंड योर मीन, इट वुड हैव कंपेयर योर मीन, it would have taken your mean AC value and compared it with your NSP and it can find your Gini। या हो सकता है उसने मीडियन लिया हो, मीडियन AC value and compared with NSP and found the Gini। या हो सकता है उसने 25th percentile या 75th percentile जहां पे उसको the best आया। and same thing it would have done between your FM and NSP and between your LB AC FM and with your LB and NSP and wherever the Gini was least वहां पे उसने उसको बेस्ट नोट ले लिया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो तुम्हारा जेनरिक होगा ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कभी ये थोड़ी ना होगा कि दैट 100 people should satisfy LP। प्रॉब्लम स्टेटमेंट would be that I want to build a model which can predict whether person falls in the class 1, 2 and 3, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और देख रहे हो, क्या हमेशा गिनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? नहीं ना। नॉर्मली मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पे गिनी लीस्ट होगा वो सबसे ऊपर आएगा, बट कैसा होता है दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या मैंने गलत बोला है? मैंने सही बोला है, सैंपल चेंज कर रहा है। सी डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर मैं इसको है ना, देखो मैं एक काम करता हूँ, इसका स्निपेट एक ना कॉपी करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, वापस डाल देखो। सो दिस गिनी वैल्यू was calculated on 0.372 was calculated on 1700 people, but ये जो गिनी वैल्यू है ना, it is not on 1700 people but only on 725 people। so अब वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकते हैं। are you getting my point? so can you notice ये 0.586 and 0.482 is less than 0.586, तो ये पहले आनी चाहिए, तुम्हारा दिमाग माइंड बोलेगा नहीं। But this 0.482 is not on the entire data. It is only on those 412 people. Sample same नहीं है। अगर sample same नहीं तो तुम compare भी नहीं कर सकते। Apple and orange वाला comparison चला जाएगा, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। So this is how you read your। अब मैं क्या करूँगा, अपना कोड रख दूंगा on the chat window। जिसका चल जाए अच्छा है, जिसका नहीं चले और भी अच्छा है। वैसे कोशिश करते रहना, जल्दी से मेरे पास डाउट लेके मत आना, ट्राई करना। ऑन सम लैपटॉप विद इन अ फ्लैश इट विल वर्क, ऑन सम लैपटॉप पीपल माइट कीप ऑन स्ट्रगलिंग, ठीक है। बट जैसे ही किसी एक का आ जाएगा, बाकी सबका भी धीरे धीरे आने लग जाएगा। अच्छा, बिफोर यू डू ब्लाइंड कोडिंग, अब यहाँ पे देखो हिस्ट्री में समझने वाली चीज कैसी है, ठीक है। एंड व्हाट आर द इश्यूज यू आर लाइकली टू एनकाउंटर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ ट्री वेयर यू हैव कंट्रोल द डेप्थ, either put depth as 4, 5 or whatever, otherwise tree would be very big। then these are your necessary imports from IPython, image and all those things। normally I am thinking the problem graphics library में आएगा, कुछ का system graphics को support नहीं कर रहा होगा, some other type of installations, ठीक है। so these are the necessary imports you have to do now। and dot data is equal to string IO। स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा, अगेन लेट मी रिपीट। सो अपने डेप्थ को कंट्रोल कर लेना, either put depth as 4, 5, 3 whatever। these are the necessary imports, इनके बिना काम नहीं चलेगा। I am creating one variable CT, एक्चुअली मैंने वो CR डाल दिया, तुम इसको
कुछ और ले लेना, CTG CTG, और फॉर टाइमिंग लेट इट बी द सेम, ठीक है ना। सो ये कुछ अलग आ गया है, एक सेकेंड में प्रॉपर शेयर करता हूँ यार। देखो अब यहाँ पे सही आएगा। आई थिंक वो तुम लोग को कोई दूसरी लाइब्रेरी दिख रही थी, ठीक है। ये नेसेसरी इंपोर्ट होगा, ठीक है। देन डॉट डेटा, देन आई एम सेइंग एक्सपोर्ट ग्राफिक्स. What is this DT_CTG? It is the name of the model which I have created. Okay. Then I am saying out file equal to dot data. What is dot data? Dot data is a empty file I have created. Then filled equal to true, rounded equal to true. अगर ये filled equal, can you notice in the boxes the values are getting filled? Boxes के अंदर values आ रहे हैं ना, वो क्यों आ रहे हैं? Because filled equal to true डाला हुआ है. And rounded equal to true. Can you notice the boxes are rounded? उनके edges rounded है, sharp edges नहीं है. सबको समझता है sharp edges and rounded edges. So if you want, you can remove this parameter also, rounded equal to true. Suppose करो अगर मैं इसको parameter को हटा देता हूँ तो क्या होगा? तो हमारे sharp edges आ जाएंगे, ठीक है ना? Then what I am doing, special characters equal to true. Within each box, do you notice that there are special characters? Equal to का symbol है, less than or equal to है, right? So those are all your special characters. Feature names equal to CTG_train_x dot columns. What is this? CTG train x is the name of your data frame. उसके columns से क्या करेगा? हमें columns के नाम मिल जाते हैं. Then I am saying graph equal to py dot graph dot data dot get value. This is a mandatory code. हमें तुम्हें run करना है. This will create your graph. And then again nothing. So basically जो तुम्हें control करना है, जो ध्यान रखना है, pass your model name and pass your this thing, ठीक है? And then it will create a image. ये थोड़ा सा तुम्हारा graphics कोड है, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा ना, I'll put these few lines on the chat window. पहले वाला कोड को एक बार इग्नोर कर दो, हो सकता है गलत हो गया हो. मैं 2 लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं. इग्नोर अब कोड चैट पे दिख रहा है. इग्नोर अब कोड दिख रहा है. मैं सही वाला कोड तुम लोग के लिए डाल देता हूँ. अगर कोई एरर आएगा तो क्या करोगे? गूगल पे जाओगे और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे. जब सोल्यूशन ढूंढते हुए थक जाओगे तब मेरे पास आओगे, ठीक है? कोई दौड़ते हुए नहीं आएगा कि सर ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा. ढूंढो सोल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूशंस में कैसे ढूंढोगे? स्टैक ओवरफ्लो पे जाना और जहां पे ग्रीन टिक हो वाला सॉल्यूशन अप्लाई करना. कब तक मैं तुम लोग की मदद करता रहूंगा? कुछ के लैपटॉप में तो बिल्कुल क्यों चल जाएगा फट से, और जिसके में नहीं चलेगा उसके इम्पोर्टेंट है. आज का क्लास टाइम कितने बजे तक है? 2 बजे तक है, तो 2 तो बज गया है. Okay, so ठीक है guys, so we have already exhausted our official time, so I'll end the session. Thank you for joining, and
try this boat at home. जिसका चल जाएगा अच्छा है. Otherwise, whenever we have our next class, we'll try to build our plot once again. Thank you for joining. I'll end the session.